Now on air with the CricCom commentary team. The penultimate game of the Lanka Premier League 2023, and it is being played between two teams which have already qualified for the playoffs. Does that make this a dead rubber? No, not at all. Because a look at the points table, Dambulla Aura are at number 1, 10 points from 7 games. Wheel of Kandy at number 2, 8 points from 7 games. But the interesting thing here is, if Wheel of Kandy can win by a big margin, they can kind of topple Dambulla Aura on the net run rate and go through to the playoffs. Because this is a playoff scenario, whoever finishes in the top two, I mean, both of them will get a second chance, of course, but you want to have the bragging rights, finishing on top of the table as Dambulla Aura take on Wheel of Kandy at Colombo. And also, Dambulla Aura are on a 4-match winning streak, as opposed to Wheel of Kandy, whose 4-match winning streak was broken by Colombo strikers last evening. So is it going to be a change of fortunes for Dambulla Aura this time around? It will be interesting to see, because one more thing that could happen is, well, if Wheel of Kandy lose by a big margin and tomorrow Gaul Titans beat Colombo strikers by a big margin, I mean, there is a slight possibility that Gaul Titans could end up
going ahead of Be Love Kandy on the net run rate. Then you never know if they win by 50, 60 odd runs. Then there is that possibility of that happening through. So hello and a warm welcome. This is the pair of Karthik and Dhanush to take you through for the penultimate league game of this tournament. And there are plenty of changes in the side. First, going through Be Love Kandy, they have had only 2 changes. And the main thing is Mujibur Rahman is back in the side. But looking at their batting options, Fakhar Zaman and Mohammad Haris, the wicketkeeper, Ashwin Bandara, Angelo Matthews, then Dinesh Chandimal, Asif Ali, Chaturanga De Silva, Vanindu Hasaranga, the captain, Isuru Udana, Nuwan Pradeep, and Mujibur Rahman. The best part was I love the way Vanindu Hasaranga said on the field. He won the toss and elected to field. And I'll exactly give you what he said. He said, we want to bowl because we really can't read these wickets at the moment. Now, as much as you can laugh on that and probably think, what is he saying? He's the captain and he's making some statements. I applaud him for his honesty that, okay, I am not able to read these wickets. I would rather, play second on this wicket. And that's not a bad thing. That's not a bad thing to accept. Whatever is there on the field. And Dhanush, what would you say about Dambulla? Well, I can understand you're on top of the table, you have qualified, but 5 changes? 5 changes for sure. The captain is also missing out today, Kushan Mendes, and he has been replaced by the vice captain Dhananjay De Silva, and that is why the opening pair also has a change out here. Avishka Fernando is opening the batting with Sadira Samara Vikrama, the promising youngster out there. And looking into that playing 11, definitely I will say that Ben McDermott will be hoping to get some runs out there. Dhananjay De Silva himself will be hoping to do well. Alex Ross had a good tournament so far, scored a 50 and also helped the team take one of the first games to the super over. Alex Ross did that in the final overs. And then there is Dushan Hemant, who has been impressive and doing well, and Lakshan Edrisinghe is the new player coming in, one of the 5 changes. Then there is Sachita Jayatilake, who has also come into the side. Hayden Kerr also has made into a side. Pramod Madhushan, nice to see him, and Shahnawaz Dahani playing in place of Hassan Ali. And here Sadira Samara Vikrama is on strike, and he starts off his innings with a terrific boundary out there. Angelo Matthews is the one who is bowling the first over, and he has found success as well. But here, length delivery outside off stump and a gentle push towards the covers region, and this is a very quick outfield. There might have been like around 30 matches happening in the last 1 month on this in this stadium, R. Premadasa Stadium, but still the wickets are holding up and are doing really well. So we have to definitely applaud the efforts that the ground staffs are putting out there. One of the things that this ground today has is that the fine leg and the square leg region is a shorter boundary. It is like 57 meters and 62 meters. So the batters will be hoping to attack those things, and that is why the bowlers are making sure to bowl it wide off stump so that there is no opportunity for the batsman to hit it in that region. This one was a good shot. He came in a step forward and then managed to gently push it towards the covers region. Sadira Samara Vikrama, one of the youngsters in Sri Lankan cricket who is growing up the ranks and making his name over the last couple of years. This time, it is bowled on the legs and he has flicked it towards the mid-wicket region, and the ball beats the fielder out there, and the ball has reached the boundary cushions for a 4. It is definitely a terrible delivery, and even though Asif Ali dived to stop that, could not do so. So, Dambulla Aura, they have something also in this game. They might be at the top of the points table, like how we said, but they have the only team to lose against Be Love Kandy. Apart from that, they have won all the other games, and the other game that they lost against Gold Titans, that was by a super over. So in a 20-over contest, the Be Love Kandy is the only team that have managed to defeat them. So in order to avenge that thing also, they will be hoping to do well. And the 5 changes is basically like giving an opportunity to the bench strength, and they know that with 10 points already in their kitty, they will be finishing up at number 1 or number 2. And that's true, but still I'm a bit quizzical about it. The reason being, meanwhile, the end of the first over, 9 for no loss are Dambulla Aura. The reason why I'm saying this is because this is the final league game, your final league game, and then in 99% these two teams are going to meet in qualifier 1. But it should not be that these 5 changes, yes, you give chances to your bench strength, but 5 changes, suddenly the momentum shifts, and then
it affects your performance tonight, and then it affects your performance in qualifier 1 as well. And you never know. Sometimes that change in momentum just kind of hurts you very badly. That's my only concern. That yes, you make 2 changes, 3 changes is fine, but 5 changes is a bit too much in my opinion. Because if I look at the experience at the Dambulla aura, well, Avishka Fernando, Samara Vikrama, yes, Ben McDermott, okay, Dhananjay De Silva, but after that there is no experience, absolutely no experience right down till that bottom. Whereas Beloved Kandy are looking a very, very set and experienced side. But I guess both teams have their own reasons to make or not make the changes, and we are now seeing spin from the other end. And also, one of the curious things about this particular ground, as Mujibur Rahman will share the new ball and he darts it on the pads, and Avishka Fernando comes across and then tickles it past short fine leg to his right to the fence for 4. So he gets his first boundary. The score moves on to 13 for no loss. So one quizzical thing about this ground is that the fielding, the fielding dimensions. One side, the leg side boundary is just 56 meters, and on the opposite end it is 76 meters. So it depends on which end you are batting at. That leg side will become your offside. Accordingly, the fielding will also change. So we might see towards the death overs bowlers from one end bowling that wide yorkers, making batters to try and make the batters fetch it to the leg side. LBW appeal, huge shout, no, says the umpire. This was, Mujib is saying it was going down the leg side, but was there bat involved? Well, it was a darter from Mujibur Rahman. Avishka Fernando walked across and looked to flick, and I thought it was very, very close, but even Mujib was not that interested, and he himself indicated to the keeper that it was probably sliding down the leg side. This time half tracker, and Avishka doesn't get the timing right. He wanted to pull it towards the mid wicket, but it came from the tip of the bat, toe end of the bat, and it has gone to the cow corners region for a single. This time, definitely, it was going down the leg. Moreover, than getting an inside edge. So he just appealed for the sake of getting some response. But the moment umpire said it's not out, he just kind of felt it. Yes, it is maybe going down the leg. And this is a brilliant over so far. 5 runs coming from it. Apart from that boundary in the first ball, it has been a good comeback by Mujibur Rahman, and he's bowling quick. He's bowling 100 kilometers per hour. That is really wonderful, and he's a guy who can bowl across 3 phases. And in this series, in this tournament, he has done 42% of his bowling in power play and 39% of the bowling in the middle overs. So we can say that the first 14-15 overs is where he brings the most of the impact. Dot ball to end the over, 15 for no loss after 2 overs for the Aura side. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और Suru Udana, the left-arm pacer, into the attack, and he starts off with the length delivery to the batter Sadira Samaravikrama, and he just gently pushes it towards the square leg fielder for no run. 32 games for him in this tournament, 26 wickets, a decent economy of 8.5, and the best of 3 for 25 for Udana. Had a great career span from 2017 to 2020, but post that he hasn't been able to get back into the Sri Lankan side or make a big impact in any franchisee league tournaments that he is being a part of. But today he has an opportunity because not like Dambulla Aura, the team Beloved Kandy has kind of followed the same suit. They have made just 2 changes. Dinesh Chandimal
has come in place of Dinesh Chandimala, and the other player is this Mujibur Rahman, who is the other player coming into the side. So those are the only two changes being done by Beloved Kandy, and it was a brilliant comeback for them, because the first two games that they played, they lost. They were in the bottom of the points table. Then they went to their home venue, that is Pallekele in Kandy, and played 3 games, won all those 3 games, and then came back here, and the first game they play, they lose once again. So they are yet to open their account here in Colombo, and it is their opportunity today to make sure that that happens. And this is the reason why Vanindu Hasaranga won the toss and elected to field first. Yes, he didn't have a decision of what to do, whether to bowl or whether to bat. But I can definitely say that in these T20 format, it is always said if you win the toss, you always bowl first, because it is going to be easy for you to know what the target is and chase. Looking into how this Colombo leg has happened, the 5 games that have happened, 3 games have been won by the team that has batted first, and 2 have been won by the teams that have bowled, that have chased. So it is even Stevens. That is why it is a bit skeptical, is what Vanindu Hasaranga said. This was a brilliant shot played by Sadira Samara Vikrama, as he once again showcases his brilliant cover drive. This time he hits it with power. Last time he hit it just gently, showing it the direction. This time he hit it with intent, beat that short cover fielder, and managed to take the ball towards the boundary line out there. 19 for no loss, and a good start for a promising talent of Sri Lankan cricket. Absolutely, promising talent of Sri Lankan cricket. Just that I feel that he can be a little bit more careful when he goes onto the park. Now this one is on the pads by Isuru Udana, and it's flicked beautifully over short fine leg for a boundary. 23 for no loss in 2.5 overs are the Dambulla aura, and the bowling has not been at its best by the Beloved Kandy. A half volley on the pads, and it's flicked nonchalantly by Sadira Samara Vikrama, and he has just got the scoreboard rolling at this point in time, and it's got to be the top 3 or 4 who have got to score runs for the Dambulla aura. As far as the Beloved Kandy are concerned, they have got more experience than the Dambulla aura, but the bowling has not been at its best. Better, fuller and straighter, as Samara Vikrama to drive that straight, but the ball went up the inner half of the bat towards the bowler, who stopped it and ensured that there was no run being scored. End of the third over, then 23 without any wicket lost are Dambulla aura. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है Matthews is back into the attack, and once again, not Matthews, it is Mujibur Rahman who is once again into the attack, because I saw the ball coming into the hands of Matthews, but he then passed it on to Mujibur Rahman, and this time once again, like his previous over, starts off with the ball bowling down the leg, and it was easy for none other than Avishka Fernando to once again go in the back foot and gently flick it towards the fine leg region, beat that short fine leg fielder, and get a boundary to himself. This time he has hit it straight over the long off region, and the ball has gone beyond the boundary cushions. First sixer of the contest, and that comes from the consistent Avishka Fernando, and he is now changing his gears, and he is hoping that the gentle start that they had in the first 3 overs is capitalized. Fuller in length, and he managed to loft it over the long off region and gets a maximum, has a body language and that short presentation of a Robin Uthappa out there, Avishka Fernando, and he is on a move right now, 16 of 9, and this is coming in straight. This time it has gone beyond. The height would be an issue, that is why the umpire has given it a not out. The DR is still there, but even Mujibur Rahman won't be taking it, because it pitched outside off stump, came in, but after that it was straight above the middle stump line is what we can see, and that is the reason he has not gone for a DRS. A single has been taken towards the mid-wicket region,
with Sadira Samaravikrama into the strike. Both the batters are on 17 runs, facing 11 balls each. Right, facing 11 balls each, and in the projected score, if I might add at this point in time, is somewhere around 160, 165. And if you want to, looking at the way 169 was defended last evening, so that might be the idea of a defendable total on this wicket. Now the carom ball from Mujib outside the off stump. Samaravikrama gets across and looks to defend, but the ball goes on the inner half towards square leg. No chance of a run there. As of now, the two fielders, in fact, no one is outside the boundary, is it? No, there is one deep square leg and deep mid wicket on the onside for Sadira Samaravikrama, and it's gone to one of those two fielders at the boundary at deep square leg. A single then to end the over, a pretty good one for the Dambulla aura, because the first two balls went for 10 and the next four have gone for 2. So even though the next four have been in the bowler's favour, but the first two balls, which were hit for 4 and 6 by Avishka, have kind of tilted that over in Dambulla's favour. 35 for no loss are the aura after being asked to bat first. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, क्राइम। Chaturanga De Silva to bowl his left arm spin comes on to bowl to Sadira Samaravikrama. He starts off with a short ball outside the off stump, and Samaravikrama has just made full use of that. Goes back and cuts it behind point for a boundary. So a second over of not behind point, sorry, it's in front of point, and second over of spin, or second bowler, a spin bowler being used inside the power play. Two seamers, Angelo Matthews and Isiru Udana, bowling 1 over each. That's 2 overs, and the remaining 2 overs have been by Mujib or Rahman. So the third over of spin, 2 bowlers, and it's another short ball, this time in front of cover. Sadira Samaravikrama goes back and punches it through the covers for a boundary, and he is on a roll now. 26 from 15 deliveries, and would you believe it, in his 26, 6 have been fours. That means in 6 balls he has scored 24 runs, and in the remaining 9 balls he has scored 2 runs. That is how it has been. While all that looks good, strike rate of 170 does look good. It would be better if those remaining balls were not dot balls, because just scoring 2 runs of those remaining 9 balls is not how you associate an opening batter to be. But again, can't find criticism in everything that you do. Another short ball from Chaturanga De Silva. He's really started way too short in this over. It's quietly tucked away through mid-wicket for a single. 44 for no loss. Third over of spin, and if you look into it, all the three overs of spin, the first ball has been a boundary. And this over also started off with a boundary out there. And Sadira Samaravikrama is definitely on a good roll today. He's in a good mood as well. 181 runs for him in this tournament. One of the top 5 run getters, along with his opening partner today, that is Avishka Fernando. He has been given that promotion in the absence of Kushal Mendes, and he has kind of grabbed it in both his hands, and he is doing well. A couple of very good seasons for him. Last year also, these two were the number 1 and number 2 when it comes to highest scorers in the tournament. And this season they are batting together, they are batting for the same team, and they have batted consistently, finding themselves in the top 5 run getters of the tournament. And that is the reason why Dambulla Aura are happily standing at the top of the points table with 10 points, and will be finishing up at the top 2 position. This time it has come in straight, and the umpire Aleem Dar has raised his finger. The ball pitched in, came in straight. Sadira Samaravikrama didn't get the bat for sure, but the ball came and plumped on the front pad, but he has gone for the DRS out there for a referral. Only the height can avoid Sadira Samaravikrama from going off the field. But apart from that, it looks to be plumped right in front of the middle stump. Well, until there is bat involved, I think that's gone, because he was right in front of the sticks, and I thought that that's going to hit the stumps for sure.
might be just sliding down the leg side. Could be a bit of an issue for the bowler there, because he's a left arm bowler, is Chaturanga De Silva. So he might just find it difficult to get this one on in, and the Kandy team are curiously watching at the giant screen as what could be it. That to the front angle, that's the first angle that I saw. I thought that was out. That was crashing into middle and leg. But now I just kind of get that feeling that it might be. Oops! Was there a murmur? Was there a murmur when the ball went past the bat? There is a minor spike when the ball just goes past the bat. And yes, there is a slight murmur, and I'm not too sure what will the third umpire feel here, because if I am seeing this, I'm almost feeling like there is that slight deviation. No, the third umpire has ruled that there has been no bat there, and yes, there you go. It is sliding down the leg side. So my first angle, I thought it was crashing into middle and leg, but on looking at that in replays time and again, we feel that it is sliding down the leg side, and that has been confirmed by Ball Tracker. But a very expensive start by Chaturanga De Silva. 10 runs from that over, 45 for no loss, and it's a good momentum shift for Dambulla Aura, because 10 runs from this one, 12 of the last one, 22 of the last 2 overs, as Mujibur Rahman gets ready to bowl the final over ऑफ द पावर प्ले। और यहाँ पर छोटी गेंद डाल दी और अविष्का फर्नांडो ने उसे पंच करने का प्रयास किया। गेंद थोड़ी जल्दी से आई, कैरम बॉल डाली थी और अविष्का फर्नांडो ने उसे पंच करने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और कवर के पास चली गई। रन लेने का कोई भी मौका नहीं वहां पर। 45 बिना किसी विकेट के नुकसान के मुजीबुर रहमान पावर प्ले में ही 3 ओवर डालते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है उनका चौथा ओवर या तो 13वें ओवर या 15वें ओवर में होगा, डेथ ओवर्स के जस्ट पहले। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट अविष्का फर्नांडो का, क्योंकि अपने आप को रूम दिया लेग साइड पे और पहले तो कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, पर अंत में उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और पॉइंट और शॉर्ट थर्ड के बीच में से उन्होंने गैप निकाल दी। और जो बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े थे खिलाड़ी और वो फखर जमान, वो गेंद के पीछे दौड़े जरूर और उन्होंने एक स्विमिंग पूल डाइव लगाई। स्विमिंग पूल डाइव उसे कहा जाता है, माफ कीजिएगा फखर शॉर्ट थर्ड पे थे। स्विमिंग पूल डाइव उसे कहा जाता है जब आप प्रीमेच्योर डाइव मारते हो, यानी बहुत एडवांस में। शायद थोड़ी देर और भागकर वो डाइव मारते तो शायद गेंद को रोक पाते थे, लेकिन नहीं, गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और उसके अगले गेंद पर एक हल्का सा अंदरूनी किनारा और इसी के साथ साझेदारी भी 50 रन की पूरी होती हुई, और इनके लिए हम देंगे एक छोटी सी अपलॉज। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों बैटर्स के द्वारा। अच्छी शुरुआत यहाँ पर दमुला ओरा के लिए। पता है उनको कि आज बहुत सारे चेंजेस है टीम में, बॉलिंग साइड में बहुत सारे चेंजेस है जरूर, पर बैटिंग में भी कुसान मेंडिस जो प्रमुख खिलाड़ी है, कप्तान है टीम का, आज नहीं खेल रहे हैं। तो उनके अनुपस्थिति में आविष्का और समर विक्रमा जो इस टूर्नामेंट में टॉप 5 रन स्कोरर्स में है, बढ़िया बैटिंग करते और एक बार शॉर्ट बॉल यहाँ पर डालते हुए मुजीबुर रहमान और एक सिंगल ले रहे हैं मिड ऑफ रीजन पर। 7 रन आ चुका है इस ओवर में और मुजीबुर रहमान अपने 100% नहीं दिया है अगर आप मुझे कहते हैं तो यहाँ पर पावर प्ले में, क्योंकि बहुत सारी बैट डिलीवरीज थी, डाउन द लेग थी और हाँ 2-3 बार बैट्समैन को चकित किया अपनी LBW अपील से, पर बड़ा फायदा नहीं मिल पाया। 4 सिंगल्स और एक बाउंड्री इस ओवर में। 26 रन दिया है 3 ओवर में मुजीब। यहाँ 53 पे बिना नुकसान 6 ओवर होने के बाद दम्बुला ओरा। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स
ही मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिक कॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और जीत नहीं पा रहे? वेल, क्या आप ठीक से तो प्लेयर्स रख रहे हैं ना? ये फैंटेसी क्रिकेट है मेरे दोस्त, यहाँ लक और तुक्के के साथ। वनिंदु हसरंगा आप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। एक और स्पिनर, तीसरे स्पिनर इस बॉलिंग यूनिट में। पहली गेंद छोटी गेंद और समर विक्रमा ने पीछे जाकर उसे सिर्फ दिशा दे दी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, जहां पर फखर जमान ने उसको रोक दिया। तो स्पिनर्स का अगर परफॉर्मेंस देखें, मुजीबुर रहमान 3 ओवर 26 रन, चतुरंगा डिसिल्वा 1 ओवर 10 रन, यानी 4 ओवर में 36 रन दिए हैं स्पिनर्स ने। तो अभी तक स्पिनर्स की शाम नहीं रही है ये, पर वनिंदु हसरंगा एक अलग ही बॉलर हैं। वो उनको आप हर एक बॉलर के साथ ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। कई बार अगर पिच स्पिन को सपोर्ट नहीं भी कर रही होगी तो भी वो अपने स्किल के हिसाब से अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगली गेंद आगे आते हुए और उसे पुश कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। हसरंगा खुद जाते हुए गेंद को रोकने के लिए, लेकिन तब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते हुए 1 रन ही मिलेगा वहां पर। तो अगर लीडिंग मोस्ट विकेट्स अगर हम देखेंगे T20s में, तो फिर मथीशा पतिराना ने 12 विकेट लिए हैं, वनिंदु हसरंगा ने 10 विकेट और वेल्ला लगे 10, और नसीम शाह और रजीता ये सारे पेसर्स है। पतिराना पेसर है, हसरंगा और वेल्ला लगे स्पिनर्स है। वो 2 स्पिनर ने 10 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में। और उसके बाद जो है शाकिब अल हसन आते हैं, और वो भी नंबर 8 के पैदान पे 7 विकेट के साथ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इसीलिए वनिंदु हसरंगा जो है अलग ही बॉलर है, आप उनको उस हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अगर देखा जाए, आज ऐसे लग रहा है कि शायद स्पिन को थोड़ा आज कम सपोर्ट है एज कंपेयर टू बाकी दिन। इसी बीच यहाँ पर एक लेग स्पिनर मिडिल स्टंप पर डाली गई थी, पीछे जाकर खेला अविष्का फर्नांडो ने डीप मिड विकेट की तरफ। 1 ही रन मिलेगा वहां पर, 57 बिना किसी विकेट के नुकसान के। अभी तक सिर्फ 4 ही रन दिए हैं हसरंगा ने, और थोड़ी बहुत यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि रन रेट को रोका जाए। प्रॉब्लम ये है कि वो 5वें गेंदबाज हैं अभी तक आते हुए, और ये एक अच्छी शुरुआत रही है डम्बुल्ला और की, और उन्हें ढूंढना पड़ेगा उनके साथ कौन एक ऐसे गेंदबाज हो सकते हैं जो रन को रोके। LBW अपील, लेकिन काफी आगे आए थे समर विक्रमा, खारिज कर दी अंपायर अलीम डार ने। 7 ओवर की समाप्ति के बाद डम्बुल्ला और 57 बिना किसी विकेट के नुकसान के, और वक्त है एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक का, मिलेगा 2.5 मिनट के अंतराल के बाद।
चतुरंगा डिसिल्वा वापस आ रहे हैं यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए। पहले ओवर में 10 रन दिया था, क्या यहाँ पर एक विकेट ले सकते हैं डिसिल्वा, क्योंकि अभी एक विकेट की जरूरत जरूर है यहाँ पर बील ऑफ कैंडी की टीम के लिए, क्योंकि 58 रनों का जो साझेदारी यहाँ हो चुका है अविष्का फर्नांडो और सदीरा समरा विक्रमा के बीच, और यहाँ पर एक बढ़िया सा स्कोर डालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बीलव का डम्बुला और, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें एक बढ़िया बैटिंग ट्रैक रहा है कोलंबो या पल्ले खेले जहाँ भी ये गेम खेले, तो बीलव कैंडी एक बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। और अगर हम उसके बैटिंग लाइनअप देखें तो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा बॉलिंग में परफॉर्म करता है, इस सीज़न पर बैटिंग से परफॉर्म किया है, वो है इस सीज़न में वो जो है कप्तान वनिंदु हसरंगा। क्योंकि बैटिंग में जब आप हाईएस्ट रन स्कोरर्स देखते हैं तो तीसरे स्थान पे है, और बॉलिंग में जब आप हाईएस्ट विकेट टेकर्स देखते हो तो दूसरे स्थान पे है। तो ऐसा एक बढ़िया सी टूर्नामेंट होता हुआ, और यहाँ एक डाउन द लेग डिलीवरी जाती हुई और पहली वाइड यहाँ आ रहा है इस गेम में, और एक वाइड के साथ एक रन भी लिया है यहाँ पर समरा विक्रमा, और स्कोर यहाँ पर जाते हुए 60 रनों पर बिना नुकसान। 3 बॉल बाकी है इस इनिंग्स में अभी, और एक स्टंपिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर था पर विकेट कीपर मिस करते हुए वहां पर, और अविष्का फर्नांडो एक बढ़िया सी सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पर सदीरा समरा विक्रमा को, और तकरीबन 28 रन बना चुके हैं, और शायद वो भी अपना 200 रन पूरे करते हुए इस सीजन में। सिर्फ 2 ही प्लेयर है इस सीजन में अब तक 200 रन पूरे करते हुए। पहले थे बाबर आजम, जो बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाकर एक शतक भी बनाया था इस टूर्नामेंट में, उसी कारण एक बढ़िया सी बैटिंग दिखाए थे। पर यहाँ पर एक बढ़िया विकेट की कोशिश जरूर थी, और यहाँ पर सदीरा समरा विक्रमा अपना विकेट दे रहे हैं, क्योंकि ये बॉल हाफ ट्रैकर था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था, और स्क्वायर कट मारने की कोशिश थी यहाँ पर बैकफुट पे जाकर सदीरा समरा विक्रमा का, और सीधा पॉइंट रीजन में फकर जमान को एक आसान सा कैच, और यहाँ पहला विकेट मिलता हुआ, और ये साझेदारी जो अच्छी चल रही थी टूटती हुई यहाँ पर 61 रन के बाद। सदीरा समरा विक्रमा जाते हैं 23 रन बनाकर, और स्कोर यहाँ पर होता है 61 पे 1, 7.5 ओवर होने के बाद। आखिरी बॉल बचा है यहाँ पर, 31 रन बनाया था, 61 भी नहीं 31 रन बनाया था सदीरा समरा विक्रमा, और जरूर अच्छे लग रहे थे जब वो क्रीज में थे, क्योंकि 6 बाउंड्री लगाए थे उस 31 रनों में, और एक बढ़िया कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। और यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी, नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस बैटिंग के लिए, नंबर 3 के लिए, और ये शायद मुझे लग रहा है इदरी सिंह है, हो सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैटर, और ज़रूर लक्सन इदरी सिंह है यहाँ पर, जो वन ऑफ द 5 चेंजेस है दम्बुला ओरा की, आज यहाँ पर खेलने आ रहे हैं। T20 करियर में तकरीबन 500 रन बना चुके हैं, और स्ट्राइक रेट है 115, बेस्ट है 63 नॉट आउट। तो देखना पड़ेगा आज यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट लक्ष्मण इदरी सिंह जो इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे, और यहाँ पर क्विकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उसे पंच कर दिया बैक टू द बॉलर। तो एक बेहतर ओवर चतुरंगा डिसिल्वा की, एक तो एक विकेट भी लिया और पूरे ओवर में सिर्फ 4 ही रन दिए, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल वापस लाते हुए यहाँ पर कैंडी, क्योंकि पिछले 2 ओवर में आए हैं सिर्फ 8 रन और 1 विकेट भी हाथ लगा है। 8 ओवर के बाद 61, 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर दम्बुल्ला और हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा।
नुमान प्रदीप आ गए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, और पहली गेंद पर ऑलमोस्ट एक कॉटन बॉल चांस था अविष्का फर्नांडो के खिलाफ। लेंथ गेंद थी मिडिल स्टंप पर, अविष्का फर्नांडो ने उसे ऑन दी अप खेलने का प्रयास किया और ऑलमोस्ट एक रिटर्न कैच जो है दे दिया, पर गेंद जो है आगे जाकर गिरी नुवन प्रदीप की। तो वो विकेट को एक बार फिर से अगर हम देखें, सदीरा समरा विक्रमा का बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था, छोटी गेंद थी, कोई टर्न नहीं, वहां पर पीछे गए और कट किया और सीधा मोहम्मद हरीस के पास बैकवर्ड पॉइंट पर। तो ऐसा कुछ बढ़िया गेंद नहीं था, पर यह बढ़िया शॉट है, लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर, उसे सिर्फ दिशा दे दी यहाँ पर अविष्का फर्नांडो ने, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और लाइन गलत थी यहाँ पर नुवन प्रदीप की, और वो थोड़े बहुत दो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट हो गए और अविष्का फर्नांडो ने उसको सिर्फ एक टांग पर दिशा दी। ऑलमोस्ट एक नटराजा शॉट, लेकिन पूरी तरह से एक नटराजा शॉट नहीं कहा जा सकता। और अब स्कोर जा पहुंचा है अविष्का फर्नांडो का 34-23 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से। अगली गेंद अब कैसे कमबैक करेंगे नुवन प्रदीप, ये देखना होगा। दाएं हाथ से ओवर द विकेट और एक बार फिर से एक्शन रिप्ले है, सिमिलर गेंद, सिमिलर शॉट, सेम रीजन जो है वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जगह पर डीप स्क्वायर लेग। एक बार फिर से नुवन प्रदीप बहुत स्ट्रेट हो गए, लेंथ बिल्कुल वही सेम था। एक बार फिर से अविष्का फर्नांडो ने अपना बायां टांग जो है ऊपर उठाया और ऑलमोस्ट आला नटराजा उसे दिशा दे दी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो 2 गेंदों में 2 छक्के, आपने कहा था, हमने कहा था पिछले 2 ओवर में 8 रन आ गए, यहां पर तो पिछले 2 गेंदों में 12 रन आ गए हैं। 73 1 विकेट के नुकसान पर दम्बुल्ला और बढ़िया बैटिंग यहाँ पर अविष्का फर्नांडो के द्वारा, और इस सीजन में ज्यादा छक्के यही मारे हैं, 56 छक्के मारे हैं। एक ही खिलाड़ी है जो 50 से भी ज्यादा इस सीजन में छक्के मारा हो, और एक और बढ़िया एक रिप्रेजेंटेशन दिखता हुआ। 2 बॉल सेम टू सेम, जेरोक्स कॉपी था और जरूर यहाँ पर पायरोटेक्निक्स आता हुआ बैटर अविष्का फर्नांडो के बल्ले से तकरीबन 64 मीटर की बाउंड्री सिक्सर थी दोनों, एक ही रीजन पे, एक ही शॉट सिलेक्शन, एक ही एग्जीक्यूशन और 12 रन आते हुए यहाँ पर। और एक बार फिर मारने की कोशिश पर यहाँ पर सीधा कॉर्नर्स रीजन के हाथों में जाता हुआ सिंगल लेकर स्ट्राइक बचा रहे हैं। नहीं, एक और डिलीवरी है इस ओवर में। 13 रन आ चुका है और सनत जयसूर्या सेटिस्फाइड होंगे अपने बल्लेबाजों के परफॉर्मेंस से। अब तक 9 ओवर तकरीबन हो चुका है और अब 74 रन बनाए हैं यहाँ पर। बढ़िया सी शुरुआत है और एवरेज स्कोर तकरीबन 160-170 है। अगर 180-190 बन जाते हैं तो जरूर दम्बुल्ला और अपने जो एक वीकर नहीं बोल सकते, यंग बॉलिंग स्क्वाड जो है, उनको जरूर एक स्कोर होगा डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हैं यहाँ पर एदिर सिनगे, और यहाँ पर 9 ओवर होने के बाद 75 पे 1 दम्बुल्ला और। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक, क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। आप बोल रहे थे कि मुजीबुर रहमान तकरीबन 14th या 15th ओवर पे आएंगे, पर यहाँ पर कप्तान वनीद हसन का 10वें ओवर के पहले ही अपने कोटा कंप्लीट करते हुए और पहली गेंद में एक बार फिर तीसरी बार इस मैच में मुजीबुर रहमान पहले ही गेंद में चौका दिया है। इस बार इधर सिंह के यहाँ पर बैकफुट पे जाकर एक जंटल सा लेट कट मारते हुए और एक बढ़िया सी शॉट थर्ड मैन रीजन से चौका मिलता हुआ। जरूर एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इस यंगस्टर के लिए, और अगर यहाँ पे एक बढ़िया सी बैटिंग करते हैं तो जरूर आगे की मैचेस में अपने भी एक नाम डाल सकते हैं प्लेइंग 11 में, और जरूर जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा उसको कन्वर्ट करेंगे तो ही आपको आगे जाकर मौका मिलेगा लंका प्रीमियर लीग में या किसी टूर्नामेंट में आपको रिकग्निशन जरूर मिलेगा इस स्टेज में।
अगर आप परफॉर्म करते हो तो। बढ़िया सी शॉट, बैकफुट पे जाकर एक बढ़िया सा लेट कट मारते हुए, और जब एक लेफ्ट हैंडर लेट कट मारता है तो जरूर एक बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए भी। और मुझे साई सुदर्शन की याद आती है बहुत। मुझे इस सिचुएशन में वो सबसे बेहतर लेट कट मारते हैं, पर यहाँ पर बेहतरीन कैच वनीदो हसरंगा के द्वारा, शॉट मिड विकेट के रीजन पे। और ये क्या कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, और अभी फील्डिंग में भी अपने कमाल दिखा रहे हैं यहाँ पर। अविष्का फर्नांडो जो चौके छक्के मार रहे थे, अभी एक बार फिर बैकफुट पे जाके पुश करने की कोशिश, और सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ शॉट मिड विकेट के रीजन में कैच पकड़ते हुए वनीदो हसरंगा, और एक बड़ी विकेट यहाँ पे मिलता हुआ बीलो कैंडी और मुजीबुर रहमान को। 80 पे 2 यहाँ पे दम्बुला और अविष्का फर्नांडो जा रहे हैं 41 पे। एक स्टार्ट यहाँ पर वेस्ट कर दिया अविष्का फर्नांडो ने। बहुत ही बढ़िया कैच वनीदो हसरंगा का, छलांग लगाई अपने दाएं तरफ शॉर्ट मिड विकेट पर, और दोनों ही डिसमिसल्स, जो दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज है सदीरा समरविक्रमा और अविष्का फर्नांडो, दोनों ही यहाँ पर सॉफ्ट डिसमिसल्स पर ही आउट हो गए हैं। और अब यहाँ पर थोड़ी सी एक मिडल ऑर्डर, और ये इंटरेस्टिंग क्या है, ये हेडन कर है, एलेक्स रॉस तो मुझे नहीं लग रहे हैं, ये हेडन कर मुझे लग रहा है उन्हें प्रमोशन दिया गया है नंबर 4 पर, बिकॉज बेन मैकडर्मट, माफ कीजिएगा, बेन मैकडर्मट आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हाँ, क्योंकि वो टीम शीट में तो उनको नंबर 10 पे लिस्ट कर दिया था, इसलिए मैं उनका नाम पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो बेन मैकडर्मट, और ये एक टाइम पे जहां पर वनिंदो हसरंगा को स्पिनर्स ला देना चाहिए, क्योंकि बेन मैकडर्मट पेस बॉलर्स को जितनी अच्छी तरह से खेलते हैं उतने ही खराब तरीके से खेलते हैं स्पिनर्स को। तो यहाँ पर आप चतुरंगा डिसिल्वा और अपने आप को यहाँ पर लगा दीजिए और स्पिनर्स की झड़ी लगा दीजिए, और आपके पास जो है बेन मैकडर्मट शायद आपको विकेट देके जाएंगे। अगर हम बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो 6 बॉलर्स यूज हो चुके हैं, एंजेलो मैथ्यूज, मुजीबुर रहमान, इसरू उडाना, चतुरंगा डिसिल्वा, वनिंदो हसरंगा और नुवन प्रदीप। और अगर हम अब बॉलिंग करें, आसिफ बॉलिंग की बात करें तो आशिन भंडारा एक ऑप्शन है, वो डाल सकते हैं थोड़ा ऑफ स्पिन। आसिफ अली भी थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप वैसे वो सोच सकते हैं। अगली गेंद, आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसे दिशा दे दी कवर के एरिया में, और 1 रन वहां पर मिलेगा। पिछली गेंद पर थोड़ी बैक ऑफ द हैंड से डाली गई थी मुजीबुर रहमान की, और इसलिए शायद थोड़ी स्किड ऑन हुई। अविष्का फर्नांडो से टर्न करना चाहते थे लेग साइड पर उस गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद हवे में गई। पर क्या बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट कप्तान वनिंदो हसरंगा द्वारा, छलांग लगाई अपनी दाएं तरफ, और गेंद को आरसीबी एक विकेट। चलिए, बेन मैकडर्मट नहीं हुए, लेकिन लक्षण एडी सिंह आउट होकर जा चुके हैं। मुजीबुर रहमान, जिनके 3 ओवर बहुत ही खराब गए थे, आखिरी ओवर में आकर यहाँ पर पासा ही पलट दिया है, क्योंकि सिर्फ 6 रन दिए हैं उन्होंने इस ओवर में और 2 विकेट लिए हैं, और वो जो 2 विकेट लिए हैं वो पिछले आखिरी 3 गेंदों में आए हैं। कैरम बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, एडी सिंह के बैकफुट पर गए, रूम दिया अपने आप को लेग साइड पर, लेकिन उन्हें रूम मिली नहीं, और बल्ले का मुंह खोलकर उसे रन डाउन करना चाहते थे थर्ड के दिशा में, लेकिन गेंद जो है अंदर आई, अंदरूनी किनारे से पास होकर गई और स्टंप्स को बिखेर दिया। तो 2 विकेट इस ओवर में आते हुए, वो भी 3 गेंदों में। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दम्बुल्ला और 81, 3 विकेट के नुकसान पर मुजीबुर रहमान 4 ओवर 32 रन और 2 विकेट। बहुत कम टाइम ऐसा होता है, हमें देखने मिलता है जहां पर मुजीबुर रहमान विकेट लेस जाते हैं, और आज की रात डेफिनेटली वो रात नहीं है। धनंजय डिसिल्वा आए हैं बेन मैकडर्मट को पार्टनर करने के लिए, और 2 नए बल्लेबाज फिलहाल क्रीज में मौजूद। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक, क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर, और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में। Dhananjay De Silva, the captain, is out here to bat, and kind of a halfway mark for sure. And the team also has been kind of zeroed down now, because both the batters are new, Ben McDermott and Dhananjay De Silva. And McDermott just hits it towards the mid-wicket region, takes a single, and it is probably Hasaranga who is bowling this over right now. Yeah. And that was a brilliant over, previous one, that was
the fourth and final over of Mujibur Rahman. We were expecting him to come a bit late, but he was given this over to complete off his quota within the first 10. And what a performance he has done in the final over, that he has bowled 2 wickets of Edrisinage and the most important one, Avishka Fernando, and reducing the team to 81 for 3, where they were at one moment looking very comfortable and having an easy walk out there on this pitch. But this is definitely giving some signs of advantage to spinners as the game is progressing, and this is Wanindu Hasaranga's time now to utilize it to his perfection, because he is one of those guys who can do anything, even on a flat wicket, and can bring the best out of himself. But when you are giving him an opportunity with some turn and bounce, he is going to make sure that that is utilized well. And some brilliant fielding effort shown by the captain himself. And Wanindu Hasaranga is kind of having a breakout tournament in a different level altogether, because we always knew him as only as a frontline spinner. But this tournament, he has been performing with the bat and on the field as well. I guess it's the end of the over currently, the last ball coming up, and it is a single being taken, and that is a chance. Will not be possible to run Dhananjay De Silva out. 4 runs coming from it, 85 for 3 after 11 are the Dambulla Ora. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स। As expected, it's a trial by spin for the Dambulla batters now, because it's because their batting lineup doesn't pose a serious threat against spin. It's Dhananjay De Silva who can definitely play spin and pace, but you look at the other options: Ben McDermott, Alex Ross, both Australians, both not the greatest at playing spin. Then Hayden Kerr, another Australian. Then Pramod Madushan, Sachinta Jayatilake, Dushan Himanta, and then Shahnawaz Dahani. So it's a very thin batting lineup. But it's something which Dambulla were prepared for, because no one makes 5 changes just like that. And I'm still questioning those 5 changes which were made. But whatever it is the case. 86 for 3. And now the ball is spinning. It's kind of spinning now. It's Chaturanga De Silva, who started off very poorly, is kind of enjoying these conditions. Just 1 run of this over so far. His previous over was also very much. He was the one who got the first breakthrough. Short delivery outside the off stump, punch straight to Angelo Matthews at short extra cover by Ben McDermott. And Dhananjay De Silva seems to be telling Ben McDermott, it's okay, ride this period out, maybe another 2 quiet overs, and then we can just go after the other bowlers once the spin is off the attack. Shorter ball outside the off stump, hint of away spin. McDermott goes back and punches it towards long on for a single. Another quiet over, just 2 runs from it. The last 3 overs have gone for 12 runs and resulted in 2 wickets. 12 gone, 87 for 3 are the Dambulla after being asked to bat first. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो We asked for a couple of overs of spin, but the paces are back, and Udana is in, and he is welcomed with a boundary through the extra covers region. And Ben McDermott, the moment his favorite players come, his favorite option comes in, he lashes onto it. Length delivery, width on offer, and he just smashed it
through the covers region for a brilliant boundary. He's an Aussie man, and Aussies always are proficient in playing fast bowling. And when a bowler like Kusur Udana, he bowls around 115, 120 speed, it is going to be easy peasy for Ben McDermott when you give him width. This time, once again, width on offer, but the ball kept low. So more like a two-pace wicket is what we can say, because the spinners are getting some uneven bounce. The pacers, they are bowling slow ones, and it's keeping low as well. So it's going to be challenging, and this is an opportunity for Ben McDermott whenever he's facing the pacers. But when he's facing the spinners, I guess he will be hoping to rotate the strikes and make sure that he doesn't take any unwanted risks against them. And this is definitely now a scenario of building up the innings back, because they were pretty much going on well, and then 3 wickets fell away in a very quick succession. And this was a brilliant fielding effort out there by the mid-off fielder as he stopped that ball and threw it back. Once again, Wanindu Hasaranga, he's been finding himself everywhere around in this game, and he is just making this Lanka Premier League his own, because with the bat, he is the 3rd highest run scorer. With the ball, he is the 2nd highest wicket taker. And on the field, he is doing so brilliantly. Just a tournament that is going to rejuvenate Sri Lanka's primary bowler heading into the World Cup season, because after this tournament is done, a couple of weeks later, from the 30th of August, we will be seeing the Asia Cup starting up, and majority of the games are happening in this very ground in our Premadasa Stadium. So it is going to be fun for Wanindu Hasaranga and the Sri Lankan team, because they are kind of defending their title. They won the title last year, but it was in a T20 format. This time it is in a 50-over format. But still, once you are Asia Cup winner, the next season you will be defending your title. And Sri Lanka will be hoping to do so in this upcoming edition of the Asia Cup. For sure, and this Lanka Premier League has come in at the right time for them, because they will unearth some new talent in all possibility, and then probably the new talent can feature in the Asia Cup and also going forward in the World Cup as well. So, and it's in their own home ground, so that's something that's very nice. But meanwhile now, Wanindu Hasaranga might just be forced to think, should I go back to spin? Should he go back to spin? Because this 1 over of pace has come back, and in fact, look at the runs which are being scored. That's 8 runs of 4 balls in this over. And looking at the last 3 overs, they resulted in just 12. So what you conceded in the last 3 overs, you have conceded more than 70%, or more than 60% in 1 over itself. And in the 7 overs left after this, well, there are 1 over of Wanindu Hasaranga, and then 3 overs, 1 over of Wanindu, 2 overs of Wanindu Hasaranga, and 1 over of Chaturanga De Silva. So that's 3 overs of the remaining 7. Can he find out more? Now this is in the air. Is this going to be taken? Extra cover, can't get there. Well, Wanindu Hasaranga can't do everything, can he? He ran across to his left, ran back from extra cover, but could not get there. And sweeper cover, meanwhile, ran ahead from the deep, but the ball landed exactly in between, and the batters got a couple of runs. So 3 out of the remaining 7 overs are started. Can he find 4 overs of spin, or should he find 4 overs of spin? I'm not sure, because Isuru Udana would have 2 overs left after this, and Nuwan Pradeep would have 3 overs. But it seems like the faster you bowl on this pitch, the quicker you could end up going for runs. So far in this over, 10 runs have come, 97 for 3 in 12.5 overs. Final delivery again. This one swung back in. Dhananjay De Silva looking to work it through the onside, but getting a thick inside edge towards deep mid wicket. Will be just a single. 11 runs from that over. 12 in the last 3, but 11 all in one entire over of pace. 13 gone. 98 for 3 at the Dambulla aura after being asked to bat first. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। There have been only 2 extras in the game so far, both coming from Chaturanga De Silva himself as he starts off this over with a wide down the leg. 99 for 3 are the Dambulla aura, and this time back foot and a punch towards the sweeper region.
Single taken by Dhananjay De Silva. 100 up for the Dambulla Ora side. They have around 41 deliveries remaining in this innings, and they will be hoping to get around 70 to 75 runs. Anything around 175 is going to be helpful for them to defend this total. It has been an even Steven wicket, we can say, 50-50, a sporting track being provided here. It's good stuff for T20 cricket when you can't predict whether the team batting first will win or team chasing will win. So that there is always competition in both the ends, both the halves of the game. And this time Chaturanga De Silva is bowling straight to Ben McDermott, and he just comes for a front foot defense. And even in that, there is chances of a leg bye that has been appealed there by the bowler. There's 3 balls remaining, and McDermott just needs to rotate strikes and keep quiet, and he does so. Fuller length delivery, pushes it to long off region, takes a single, and gives the strike to Dhananjay De Silva. And De Silva has taken 10 deliveries already, the captain of the day, and has scored just 8 runs. So he needs to take the ownership and go berserk from now on. There is one more option, like how you said, with Asif Ali in the attack. But will Hasaranga use him? That is something that needs to be seen out there. Once again, it was going straight down the line, down the leg. But one more thing is Dhananjay De Silva did not time it as well. He did not even touch that ball, and that came in and plumped on the front pad. Couple of balls remaining in this over, and it has been just 3 runs, and this time he pushes it towards the final leg region, and they managed to take a couple of runs. Good running between the wickets out there between both the batters, and this is what is required in the middle overs. First signs of 2 runs we have seen in this contest. It has always been single, dot ball, a boundary here and there, but not much when it comes to running between the wickets or quickness between the wickets. So it is nice to see these things being implemented as well. Even Steven is what we are seeing currently between both the sides, where we can say Dambulla is not too ahead, nor Kandy is keeping them under control. Last ball of this over and the spell, Chaturanga went for 10 runs in his first over, but after that has come back really well. In the remaining, after that, 2.5 overs and just 11 runs and a wicket. Last ball coming up, and he concedes a single out there in the square leg region, ending his spell at 22 and a wicket in 4 overs. 104 for 3 after 14 overs. 104 for 3 after 14 hours. And Dhanush, I just realized this. These are 2 brothers bowling in tandem. Chaturanga De Silva is the elder brother of Vanindu Hasaranga by 7 years. So Chaturanga De Silva is 33 years old, and Vanindu Hasaranga is 26 years old. And one just gets the feeling that Vanindu Hasaranga was the luckier of the 2 brothers. And sometimes people are lucky because they get more opportunities as compared to the others. But can't say the same about the Hasaranga brothers. It's not always fair to say that you got opportunities because you were lucky. You get opportunities because you play well. And one of the things that we could note probably is that maybe Chaturanga De Silva batted in an era where there were Bowled in an era when Rangana Herath was there. Yes, Rangana Herath, Ajanta Mendes, Suraj Randev, and other such players were there. And Vanindu Hasaranga, when he's actually come in Sri Lanka are almost down and out. They don't have enough players. So that also could be there. I agree that, but then I don't want to take anything away from Vanindu Hasaranga. Rather than saying he was luckier that he could play in an era where there was no one available for Sri Lanka, I would rather say that he has stormed his way into the Lankan setup. Nuwan Pradeep now comes back in the attack and almost gets Dhananjay De Silva out. A slower delivery outside the off stump. Dhananjay De Silva backed away and then looked to steer it to third man. Yes, it's a back of the hand slower delivery from Nuwan Pradeep. Oh my gosh, got the inside edge and the ball just about missed that off stump. And Dhananjay De Silva will kind of admonishing himself. This partnership has been okay. 23 from 26 deliveries. Pradeep now charging over the wicket to Irish bottom. That goes the off stump. Nuwan Pradeep almost got a wicket on the previous delivery, and this time has definitely got a wicket on the next delivery. Another slow delivery outside the off stump. Dhananjay De Silva looking to pull but missed it, and the off stump is a mess. It's been carted around of the pole, and another back of the hand slower delivery. It's something which Nuwan Pradeep has kind of developed
in his repertoire. And Dhananjay De Silva, he was struggling. Dhanush did mention in the previous stint that he has consumed a lot of balls and it's now time for him to step up. But what's happened, he was 8 from 10 deliveries and in the next 5 deliveries he scored just 2 runs and eventually has fallen on the 6th. Bowled by Nuwan Pradeep for 10 from 16, the Dambulla Aura now are 104 for 4 and the Beel of Kandy are into the soft underbelly of the Dambulla Aura. Remember that they have made 5 changes today and it's now time for a strategic break. The right time taken by the batting team. The bowling team takes a strategic break from overs 7 to 9 while the batting team can take it any time between overs 13 to 16 and they have chosen the right opportunity because a wicket has fallen. You might as well take the break now rather than some time later. We'll be back once the break ends. Two Aussie batters out here together, Ben McDermott and Alex Ross out here to bat, and it is going to be fun now to see how Hasaranga utilizes his bowlers because the Pacers have kind of given away runs, have gone for quite a few, but Nuwan Pradeep did well. 13 runs he gave away in the first over, and this over he bowled a back of a hand delivery which kept low, and the batter, the Dhananjay De Silva, went out for a pull shot, missed it, and the ball just tumbled the off stump, and the wicket went off the captain of the Dambulla Aura side. And this is going to be fun now for the remaining 5 overs that is going to come. And the very first ball, Alex Ross also has to walk back, and second time in this game that one over has costed 2 wickets out there. Mujibur Rahman did it in the 10th over, and now Nuwan Pradeep has done it 4 overs later. And Alex Ross, whom we were expecting to just smash, bang and go hard, has kind of given that gap between bat and pad. The ball takes the inside edge and chops off to the leg stump. And Ross needs to go back for a golden duck. And not a golden duck, second ball duck. And this is 104 for 5 for Dambulla Aura. And they are in trouble. Big trouble. And remember, they made 5 changes for this game. 5 changes. Is that going to come back and haunt them? Because whatever I called as a soft underbelly, it's now a softer underbelly. Because the batters to come, Hayden Kerr, Dushan Hemanta, Sachita Jayatilake, Pramod Madhushan and Shanawaz Dhani. And it's almost like, I think it would be better if we say we don't know the batting abilities of any of these batters.
It will be a great ask if they can score at even 6 per over from here on. And practical sense, just give Ben McDermott as much strike as possible, and in the 17th or 18th over, go hard after the bowling. Nuwan Pradeep now has picked up 2 wickets for 14 runs, and what an over this has been. 5 dot balls on the track. Could this be a double wicket maiden for Nuwan Pradeep? He got Dhananjay De Silva with the back of the hand slow delivery, and he got Alex Ross with a straighter one, and now it is a double wicket maiden as Hayden Kerr, was the new man in, has come up with a gentle push of the front foot towards cover. Magnificent over from Nuwan Pradeep, and for that we believe he should deserve a round of applause. A double wicket maiden. पंद्रह ओवर के बाद 104, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर अब हो चुकी है दम्बुल्ला ओरा की टीम, और बिल्कुल भी कोई ओरा नहीं रह गया है अभी। अगर हम इस बल्लेबाजी की बात करें तो 2 बार इस पारी में 1 ओवर में 2 विकेट गिरे हैं। पहले मुजीबुर रहमान ने 10वीं ओवर में लिया था, 4थे और 6ठे गेंद पर, और इस ओवर में अभी हाल ही में समाप्त हुए ओवर में 15वीं ओवर में नुवन प्रदीप ने लिया है 3री और 5वीं गेंद पर, और इसी के साथ नुवन प्रदीप के 100 विकेट पूरे हो गए T20 क्रिकेट में। और यहां पर इसी बीच वनिंदु हसरंगा आए हैं अपना 3रा ओवर डालने के लिए। दूसरी गेंद पर एक रिवर्स स्वीप मारा है हेडन कर ने, शॉट थर्ड के राइट साइड से जाते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट वहां पर हेडन कर का, क्योंकि रिस्की तो था पर बिना रिस्क के आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, और उन्होंने अपना खाता भी खोल दिया है। एक रिस्की शॉट बट एक प्रोडक्टिव शॉट एट द एंड। 109, 5 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर के पश्चात 28 गेंदें यहां पर शेष हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डम्बुला 160 तक नहीं पहुंच पाई फिर बहुत मुश्किल होगा उन्हें ये मैच जीतना। अब गूगली वनिंदु हसरंगा द्वारा हेडन कर उसे पढ़ ही नहीं पाए, फ्लिक करने का प्रयास, चूक गए, गेंद उनके पैड को लगकर शॉर्ट थर्ड की तरफ चली गई, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। 109, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर अभी मैकडर्मट और हेडन कर को टीम को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी सी गड्ढे में है यहाँ पर दम्बुला की बैटिंग, और बाउंड्रीज की जरूरत है। और एक और मिलता हुआ यहाँ पर हेडन कर के द्वारा फुल लेंथ डिलीवरी था, और सीधा डाउन द ग्राउंड मारते हुए एक चौका मिल रहा है यहाँ पर हेडन कर को, और 9 रन आ चुका है इस ओवर में। अब तक 2 गेंदें बाकी है, और अभी दम्बुला और के ये दोनों बैटर सिर्फ सोचेंगे कि जितना रन बना सकते हैं उतना रन बनाएगा, क्योंकि इस गेम में अगर एक रन हो तो आपके पास तो डिफेंड करने में यूज होगा। यहाँ पर ओवर थ्रो भी हो रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है वनिंदु हसरंगा को छोड़कर सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। वनिंदु हसरंगा एक ही क्रिकेटर है जो स्पीड में परफेक्ट दिख रहा है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, और जब वो बॉलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो अननेसेसरी स्टफ होता है। 10 रन आ चुका है यहाँ पर। मैकडर्मट खेल रहे हैं अपने यहाँ पर आखिरी डिलीवरी, और ये सीधा स्टंप लाइन पे है और डॉट बॉल की तरह एंड करते हुए यहाँ पर 16 ओवर हो चुका है। 114 पे 5 दम्बुला और 4 ओवर बचा है अभी। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर, और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स। नुवन प्रदीप वापस आ गए हैं, और हम बात कर रहे थे कुछ क्षण पहले, अभी नहीं कुछ क्षण पहले, कि किस तरह से
श्रीलंका को यहाँ पर मदद मिल सकती है, क्योंकि ये लंका प्रीमियर लीग श्रीलंका में है। इसके बाद एशिया कप भी इधर ही खेला जाएगा और फिर इस लंका प्रीमियर लीग से कुछ उभर कर आएंगे श्रीलंका के सितारे जो एशिया कप में उनके लिए खेल सकते हैं और आगे जाके वर्ल्ड कप में भी खेल सकते हैं। पर अभी ऑफ एयर धनुष ने काफी एक इंटरेस्टिंग, एक्चुअली लॉजिकल बात ही है, पर एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर हम 100 को देखें जो अभी फिलहाल चल रहा है यूके में और ये टूर्नामेंट में देखें तो 100 में 8 टीम्स खेल रहे हैं। पुरुषों में भी 8 जन है और महिलाओं में भी 8 टीम्स हैं। तो दोनों में 8 टीम्स में से 4 टीम क्वालिफाई कर रहे हैं प्ले ऑफ्स के लिए, 3 टीम माफ कीजिएगा। और यहाँ पे उल्टा अब ऐसे हो रहा है कि 5 टीम ही खेल रही हैं और 5 टीम में से 4 टीम क्वालिफाई कर रही है। इससे बेटर तो ईसीएस है, 11 टीम में से 4 ही टीम क्वालिफाई कर रहे। तो ये थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अनफेयर हो जाता है कि आपके पास टैलेंट पूल, जैसे अभी हमने WPL में भी देखा था कुछ महीने पहले भारत में है, क्योंकि बस प्लेयर्स ही नहीं है तो फिर आप गिन चुन के आप 5 ही टीम्स बना सकते हो। तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है लंका के लिए कि सबसे पहले तो उन्हें ये कोशिश करना होगा कि कैसे भी करके 6 या 7 टीम तो रखे। सीपीएल में भी आप 6 टीम रख पाते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 8 टीम, पाकिस्तान में 8 टीम, बांग्लादेश में भी 8 टीम आ जाते हैं, भारत में तो 8 टीम है, भारत में तो 10 टीम हो गए अभी। तो अगर आप टीम्स नहीं बना पाओगे तो आपके पास प्लेयर्स ही नहीं होंगे, ये दर्शाता है। इसी बीच पैट्स पहले नुवन प्रदीप की गेंद और बेन मैकडर्मट ने फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ 2 रन के लिए। आपकी राय इस पर धनुष? हाँ जरूर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर आप 5 टीम के साथ खेल रहे हो तो पहले ही आपका एक जो वो टूर्नामेंट साइज है वो छोटा हो जाता है और उसमें भी आप टॉप 4 क्वालिफिकेशन बोलते हो तो एक टीम को ऐसा लगता है कि चुन के 5 में 4 चुनकर एक को सॉरी बोल दिया जैसे ऐसा लगता है मुझे, कंसोलेशन प्राइज दे देते हैं और पार्टिसिपेशन मेडल मिल जाता है उनको। पर यहाँ पर अच्छी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बेन मैकडर्मट, क्योंकि आगे आकर यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर एक बढ़िया सी बाउंड्री मारते हुए 123 पे पहुंच चुका है स्कोर। यहाँ पर बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी अच्छी तरीके से रीड किया था, शॉर्ट पिच डिलीवरी था, आगे आकर बढ़िया सा शॉट यहाँ पे मारते हुए फ्रंट ऑफ द विकेट बेन मैकडर्मट। और जरूर अभी दम्बुला ओरा को यहाँ पे एक बढ़िया स्कोर के ऊपर लेने जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास बॉलिंग आज युवा प्रतिभा है उनकी बॉलिंग अटैक में जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी कारण आपको एक अच्छा स्कोर होगा डिफेंड करने के लिए। और बीलव कैंडी एक छोटी सी टीम नहीं है, वो भी बड़ी बैटर्स है, फखर जमान है, मोहम्मद हारिस है ओपनर्स के द्वारा, और देन वनीदो हसरंगा अभी प्रमोशन लेकर नंबर 3 में आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो जरूर उनके बल्ले से एक्सपेक्टेशंस होगा। पर यहाँ पर मैकडर्मट को एक लकी बाउंड्री मिलता हुआ इनसाइड एज होकर फाइन लेग फील्डर को बीट करते हुए बाउंड्री पे जा रहा है। बैक टू बैक बाउंड्रीज और इस ओवर में तकरीबन 11 रन आते हुए 137 पे 5 17 ओवर होने के बाद। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहेगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग। स्वागत है आपका। तो कहीं ना कहीं जब हम ये मजाक का मतलब मजाक की बात नहीं है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है श्रीलंका के लिए कि जिस तरह से हम भारत में या बाकी कंट्रीज में महिला क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, वहां पर प्लेयर्स की कमी रहती है। तो उसी हिसाब से श्रीलंका के लिए भी प्लेयर्स ढूंढ निकालने पड़ेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर दम्बुला रन्स ढूंढ निकाल रहे हैं और रन्स किसके अगेंस्ट आ रहे हैं? वनिंदो हसरंगा के अगेंस्ट। छोटी गेंद थी, गूगली और बेन मैकडर्मट ने उसे पिक किया, पीछे गए और उसे पुल, एक्चुअली पीछे नहीं गए, आगे बैठे एक घुटने पर और स्लॉग स्वीप कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये एक डिसिसिव ब्लो हो सकता है क्योंकि वनिंदो हसरंगा विदाउट अ डाउट उनके बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन आज वनिंदो हसरंगा को एक भी विकेट दिया नहीं है। और इसी बीच अगले बॉल पर उसे मिड विकेट की दिशा में खेल दिया 2 रन के लिए। तो 1 6 2 9 रन आ गए हैं इन 3 गेंदों में, पहले 3 गेंदों में। और यहाँ पर स्कोर अब बढ़ता हुआ 136, 5 विकेट के नुकसान पर। बेन मैकडर्मट बहुत ही बढ़िया पारी अब खेलते हुए 20 गेंदों में 31 और उसे बना दीजिए 21 गेंदों में 37।
एक और गूगली, और क्या ये कैच पकड़ा जा सकता था, ये सिर्फ वो फील्डर ही बता सकते हैं। गूगली ऑफ के बाहर, बेन मैकडर्मट एक बार फिर से अपने घुटने में बैठकर उसे स्लॉग स्वीप कर बैठे और उसे स्लॉग स्वीप कर दिया वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। इसरू उड़ाना वहां पर मौजूद थे, उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों के बीच से गई या उनके हाथों के ऊपर से गई, यही सिर्फ देखना बाकी है, क्योंकि एक एंगल से ऐसा लग रहा था कि वो कैचेबल था। बॉल में ज्यादा फ्लाइट नहीं थी, ओ नहीं, काफी ऊपर से गई। पर हाँ, एक सवाल जरूर है कि उदाना इतने अंदर क्यों आ गए थे। शायद अगर वो रोप्स पे खड़े रहते तो ठीक ठाक से जंप लगाकर गेंद को रोक पाते। पांचवी गेंद डॉट बॉल, एक और गूगली पंच बैक टू द बॉलर, पर इस ओवर में ऑलरेडी आ गए हैं 15 रन, 142, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर पहुंच चुकी है डम्बुला। और एक और कि यहाँ पे आउट है या फिर ये 6 है। आखिरी गेंद और यहाँ पर विकेट ले लिया है वनिंदु हसरंगा। तो पहली बार छक्का, दूसरी बार छक्का, तीसरी बार विकेट। लास्ट लाफ वनिंदु हसरंगा को एक और गूगली ऑफ स्टंप के बाहर। बेन मैकडर्मट ने एक और स्लॉग स्वीप लगाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार जो है लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री टारगेट करने के चक्कर में ज्यादा हवा में मार दिया। शॉट में ताकत तो थी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी उतनी नहीं थी, और फील्डर ने एक अच्छा कैच लपक लिया वहां पर, और आशीष भंडारा थे फील्डर, और वनिंदु हसरंगा शायद वो लेंगे। चलिए, आपने मुझे इस ओवर में 15 रन स्कोर तो कर दिए 5 गेंदों में, लेकिन आखिर में मैंने आपका विकेट निकाला। वनिंदु हसरंगा का स्पेल समाप्त, 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। बेन मैकडर्मट की पारी समाप्त, 37 रन 23 गेंदों में, लेकिन ये जो पारी है उसने डम्बुल्ला और को एक मोमेंटम जरूर दे दिया है, क्योंकि ये जो 15 रन वाला ओवर है उसने डम्बुल्ला को 160 तक पहुंचने का एक मौका जरूर दिया है। 142, 6 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर शेष। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है कॉन्ग्स बज, और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिकॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और और यहाँ पर 1900 ओवर प्रगति में है। जय तिलके आए हैं नए बल्लेबाज, सचिता जय तिलके। ये उन बल्लेबाजों में से है, प्लेयर्स में से है, जिन्हें आज मौका दिया गया है। 5 चेंजेस किए हैं डम्बुल्ला की टीम ने, और ये उनमें से एक है। पर बेन मैकडर्मट काफी अच्छी पारी खेल के जाते हुए, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो काफी है, क्योंकि चलिए 143 तक तो पहुंच गए। अब यहाँ पर डम्बुल्ला और इसरुदाना आ रहे हैं 1900 ओवर डालने के लिए। पहले गेंद पर हेडन कर ने एक सिंगल ले लिया, और अगले गेंद पर जय तिलके डाएं हाथ के खिलाड़ी बल्लेबाज है, और उन्होंने बैक टू द बॉलर खेल लिया। इंटरेस्टिंगली वनिंदु हसरंगा ने एक स्लिप रखा है, एक्चुअली एक स्लिप नहीं, वाइड स्लिप है जो फ्लोट हो रहा है, और वो वहां पर खड़ा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है कि 19 ओवर में आपने एक बैटर के लिए एक क्या कहते हैं, एक स्लिप रखा है। हो सकता है कि वहां पर उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मे बी ये बैटर जो है एज करके निकल जाएगा। ओवर पिच गेंद, और यहाँ पर सीधा ड्राइव कर दिया एंजेलो मैथ्यूज की तरफ एक्स्ट्रा कवर पे, पर रन लेने का मौका भी था वहां पर, और रन ले भी लिया। 3 गेंदों में 2 रन आते हुए इस 19वें ओवर में 144, 6 विकेट के नुकसान पर इसरू उड़ान। और आई एम श्योर कि आखिरी ओवर डालेंगे नुवन प्रदीप, 3 ओवर 27 रन 2 विकेट। पर जहां तक बॉलिंग का सवाल है, मुजीबुर रहमान 4 ओवर 32 रन 2 विकेट। वनिंदु हसरंगा के बड़े भाई चतुरंगा डिसिल्वा 4 ओवर 21 रन 1 विकेट। वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। नुवन प्रदीप 3 ओवर 27 रन 2 विकेट, जिसमें एक मेडन भी शामिल है। उड़ाना ओवर द विकेट हेडन कर को, और एक गेंद हवे में डीप मिड विकेट की तरफ, डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, छक्के की तरफ चली गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ 150 रन पूरे डम्बुल्ला और आके, और वो 160 के और भी करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि 8 गेंदें शेष हैं। और अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली बैटिंग करेंगे, प्रैक्टिकल सेंस के साथ, तो यहाँ पर 165 भी
पहुंचा जा सकता है। धीमी गति की गेंद मिडिल स्टंप पर, हेडन कर पहले से ही अक्रॉस खड़े थे क्योंकि वो बाउंड्री जो है लेग साइड की वो ये वाले एंगल से छोटी बाउंड्री है और उन्होंने सिर्फ इसे फ्लिक कर दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। 150, 6 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदें शेष। इन 8 गेंदों में कितने रन बना सकती है दम्बुल्ला और कितने रन तक रोक सकती है बील ऑफ कैंडी। अगली गेंद एक और धीमी गति की गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से थोड़ी दूर और हेडन कर अक्रॉस जाकर उन्होंने उसे वर्क कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। एक ही रन मिलेगा, 9 रन इस ओवर में आते हुए। अब जय तिलक ये कोशिश करेंगे कि ये वाला एक फ्री हिट टाइप बॉल है क्योंकि अगर इसमें आउट भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें अगर रन नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश इनकी यही होगी कि ये रन पर सिंगल ना ले ताकि आखिरी ओवर में जितने बॉल्स हो सके ज्यादा से ज्यादा बॉल जो है हेडन कर के पास, तो या तो अब 2 रन ले, 4 रन ले, 6 रन ले या फिर कोई रन ना ले, लेकिन ऑड नंबर्स ना ले, यानी 1 रन या 3 रन ना ले। फुलर लेंथ की गेंद उसे ड्राइव कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के राइट साइड से, 1 रन तो मिल ही जाएगा और चलिए दूसरा रन भी प्राप्त कर लेंगे। 11 रन उस ओवर में आते हुए। पिछले 2 ओवर में पिछले 3 ओवर में 39 रन, एक्चुअली 4 में अगर पकड़ो तो 49 रन आते हुए 19 ओवर के बाद दम्बुल्ला और 153, 6 विकेट के नुकसान पर। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है यश पाठक। क्रिकॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। इस ऐप पर दोस्तों आपको मिलेगा आंखों देखा हाल, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है उसका हम सिलसिला बताएंगे आपको एक अलग अंदाज में। पॉडकास्ट से लेकर लाइव पॉडकास्ट भी हम कवर करेंगे आपके लिए। तो क्रिकेट की दुनिया का भंडार है इस ऐप पर। और अगर आपको न्यूज चाहिए डेली, वीकली, मंथली, तो मेरे एक मसालेदार अंदाज में मैं आपको पेश करूंगा। थोड़ा ऊट पटांग सा ही होगा लेकिन मजा जरूर आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे पर्सनल पॉडकास्ट पर जिसका नाम है कॉन्ग्स बज और मेरा नाम है यश पाठक। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिकॉन्ग ऐप। क्रिकॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स। आखिरी ओवर यहाँ पर 153 पे 6 यहाँ पर हेडन कर एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं रन्स मारने की। पहली गेंद में एक सिंगल लेकर स्ट्राइक दे रहे हैं जय तिलक के को और प्रदीप यहाँ पर आखिरी ओवर बॉलिंग करते हुए। पहले ओवर में 13 रन दिए थे, दूसरे ओवर डबल विकेट मेडन था, तीसरा ओवर में 14 रन दिए थे और अभी आखिरी ओवर यहाँ पर बॉलिंग करने आ रहे हैं। पहली बॉल में एक सिंगल, क्या यहाँ पर विकेट लेंगे? यॉर्कर डिलीवरी, बढ़िया सा यॉर्कर सीधा पैर के ऊपर मारा और एक लेग बाइस मिलेगा यहाँ पर जय तिलक को और दम्बुल्ला ओरा को। और जब भी ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही थी मुझे लग रहा था कि 175, 180 एक बढ़िया स्कोर होगा, पर अभी जो कमबैक किया है यहाँ पे उन मिडिल ओवर्स में बील ऑफ कैंडी ने, जरूर यहाँ पे 5 से 10 रन कम है यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्योंकि 160 तक अब ये डिफेंड कर लेते हैं तो एक बढ़िया स्कोर होगा यहाँ पर डिफेंड चेस करने के लिए बील ऑफ कैंडी को। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 6 ओवर में 53 थे बिना कोई विकेट के और अगले 9 ओवर में उन्होंने 51 रन ही बनाए हैं और 5 विकेट खोए हैं। तो मिडिल ओवर्स डेफिनेटली आपने बैंग ऑन बताया। और मिडिल ओवर्स में ऐसे 2 ओवर आए जहां पर एक ही ओवर में 2 विकेट गए। एक तो 10वां ओवर मुजीब का 6 रन 2 विकेट और वो 15वां ओवर नुवन प्रदीप का कोई रन नहीं 2 विकेट। तो ऐसे 2 ओवर आए जहां पर टोटल 2 ओवर में 6 रन आए और 4 विकेट गए। इसी बीच खराब गेंद नुवन प्रदीप की, स्लोअर गेंद लेकिन लेंथ, और वो नो बॉल भी है, छोटी गेंद लेग स्टंप के बाहर और इसे पुल कर दिया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से और ये नो बॉल ओवर स्टेपिंग के लिए है। तो ये एक दिशाहीन गेंद नुवन प्रदीप की ओवर स्टेपिंग तो लग नहीं रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेकंड बाउंसर ऑफ द ओवर है, इसके लिए उसे नो बॉल दिया गया है। आई थिंक सो। अरे नहीं, यहां से तो ऐसा लग रहा है कि ये नो बॉल है, तो वो कौन सा, शायद वो दूसरे बॉल का नो रिप्ले होगा क्योंकि ये एंगल से तो क्लियरली दिख रहा है कि ओवर स्टेपिंग है। तो नो, हाँ ये वाला प्रॉपर रिप्ले है। तो अभी भरोसा ही नहीं रहा है कि वहां पर जो कैमरा डायरेक्टर है वो हमें बराबर रिप्ले दे भी रहे हैं या नहीं। 160, 6 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर दम्बुल्ला और आप फ्री हिट मिलने वाला है हेडन कर को, जो अब 14 गेंदों में 25 रन पर पहुंच गए हैं 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। तो उनका भी एक अच्छा कैमियो माना जाएगा। तो 2 ऑस्ट्रेलियंस ने मिलकर यहाँ पर एक अच्छा कैमियो खेला है और करीब करीब यहाँ पर दम्बुल्ला को जो है 165 के लक्ष्य तक तो पहुंचा ही दिया है। 3 गेंदें शेष है, वो कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना 170 के टोटल तक पहुंचा जाए, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप थी 61,
7.5 ओवर में, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कम से कम 100 रन तो आराम से आ जाने चाहिए। तो 100 रन तो आ गए हैं, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद एक फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर उसे पंच कर दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। हेडन कर को चाहिए थे 2 रन, लेकिन जय तिलके ने उन्हें वापस भेज दिया। शायद रन आउट हो जाते थे जय तिलके बॉलर्स एंड पर, और यहाँ पर नुवन प्रदीप गेंद को पहुंच रहे हैं। तो ये अच्छी खबर नहीं है दम्बुल्ला और के लिए, क्योंकि गेंद पहुंच रहे हैं मतलब यहाँ पर ओस गिर रही है। तो ओस गिरेगी तो सेकंड इनिंग्स में बॉल जो है अच्छी तरह से आएगी, बैट पर स्किड ऑन करके आएगी, और स्पिनर्स को बहुत दिक्कत होगी गेंद को पकड़ने में। शायद वही एक रीजन है नुवन प्रदीप ये आखिरी ओवर इतनी अच्छी तरह से नहीं डाल पा रहे हैं। काफी रन गए हैं अभी तक इस ओवर में, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। एक और यॉर्कर लेग स्टंप के काफी बाहर बैट्समैन को फॉलो करते हुए जय तिलके ने उसे आशीन भंडारा की तरफ खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिर्फ 1 रन। तो वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने 5 गेंदें डाली हैं, 5 लीगल गेंदें, 5 लीगल गेंदों में इन्होंने सिर्फ 4 रन दिए, और वो जो एक अतिरिक्त गेंद है उसमें उन्होंने 5 रन दिए। तो उस हिसाब से काफी अच्छी गेंदबाजी रही है, एक्सेप्ट फॉर दैट 1 बॉल जो काफी खराब गई थी और एक्स्ट्रा भी आ गए थे। 162 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस पारी की। क्या हेडन कर इसमें कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं, या फिर नुवन प्रदीप ये ओवर जो है अपने नाम कर जाएंगे 1 विकेट के साथ। आखिरी गेंद इस पारी की, धीमी गति की गेंद फ्लिक कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। क्या ये सीमा रेखा के बाहर जाएगी? जी नहीं, वरिंदो हसरंगा वहां पर मौजूद है और उन्होंने लिया है। तो ये ओवर जो अच्छा बीत रहा था दम्बुल्ला और के लिए अब समाप्त हुआ है कैंडी के नाम, क्योंकि 7 8 9 रन आते हुए 5 गेंदों में, लेकिन आखिरी गेंद पर एक कैच लपक लिया, और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति के बाद दम्बुल्ला और का स्कोर होता है 162 7 विकेट के नुकसान पर। लेकिन हेडन करने एक अच्छी पारी खेली, 16 गेंदों में 26 रन। तो एक पारी जहां पर सिर्फ 4 बल्लेबाजों ने एक अच्छी पारी की। पहले तो ओपनर्स अविष्का फर्नांडो और सदीरा समरविक्रमा 61 रनों की एक साझेदारी निभाई 7.5 ओवर में, जहां पर समरविक्रमा ने बनाए 31 रन, लेकिन 61 फॉर नो लॉस से वो स्लिप हो गए 104 पर 5, यानी उन्होंने 5 विकेट 44 के स्कोर पर खो दिया, और वो एक अंतराल में, इस तरह के अंतराल में आया, यानी 5 फॉर 44 इन 43 बॉल्स, यानी 7 ओवर में उन्होंने सिर्फ 44 रन बनाए और 5 विकेट खोए थे। और वो था तभी अविष्का फर्नांडो भी आउट हो गए 41 पर, लक्षण एडीवी सिंह 6 रन पर आउट हो गए, धनंजय डिसिल्वा 10 रन बनाकर आउट हो गए, एलेक्स रॉस 2 बॉल में 0 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक पार्टनरशिप आई 2 ऑस्ट्रेलियंस के बीच, बेन मैकडर्मट और हेडन कर, उन्होंने 38 रन जोड़े 6ठे विकेट के लिए, और वो क्विक फायर स्टैंड थी, वो आई थी 29 गेंदों में 36 रन, और बेन मैकडर्मट काउंटर अटैकिंग करते हुए आउट हो गए 23 गेंदों में 37 रन बनाकर। और फिर उसके बाद हेडन कर ने वो अटैकिंग रोल ले लिया और वो अंत में आउट हो गए आखिरी गेंद पर 16 रन बनाकर 26 गेंदों में, और सचिता जयतिलके के अंत में आकर सिर्फ 4 रन बना पाए। डिसिप्लिन बॉलिंग थी कैंडी की, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में आए थे 58 रन, एक्चुअली पहले 6 ओवर में आए थे 53 रन बिना कोई विकेट खोए, आखिरी 5 ओवर में आए 58 रन 2 विकेट के, यानी 12 ओवर में उन्होंने 111 रन दिए 2 विकेट लेकर। लेकिन जो बीच के 9 ओवर हैं, 11 ओवर में माफ करूंगा, बीच के 9 ओवर जो हैं वो उनके नाम थे, जहां पर उन्होंने 51 रन दिए और 5 विकेट दिए। और अब धनुष आपको बताएंगे कौन से गेंदबाजों ने उन्होंने प्रभावित किया। एक्चुअली मैं तो उसने हर मैच की तरह शुरू में एक ओवर बॉलिंग करके कुछ नहीं किया, उसके बाद 9 रन दिए थे। उसके बाद मुजीबुर रहमान 3 ओवर किए थे पावर प्ले में, बहुत सारे रन गए थे, पर आखिरी ओवर में जो 10वीं ओवर में आकर 6 रन देकर 2 विकेट लिए, वहां पर जो मोमेंटम शिफ्टिंग मोमेंट था वहां पर व्हील ऑफ कैंडी के लिए। और उसके बाद इसुरु उड़ाना महंगे साबित हुए, 30 रन दिए 3 ओवर में। चतुरंग डिसिल्वा पहले ओवर बहुत सारे रन में गए, 10 रन दिए थे, पर उसके बाद बढ़िया कमबैक किया, 4 ओवर में 21 रन और 1 विकेट। वनिंदो हसरंगा को 33 रन मारा गया और आखिरी गेंद में, यहाँ उनके स्पेल के आखिरी गेंद में विकेट लेके वो स्पेल खत्म किया। और जो बेस्ट बॉलर थे वो नुवन प्रदीप थे, क्योंकि 3 विकेट लिए 35 रन पर और एक डबल विकेट मेड भी डाली। तो इसी कारण 162 पे यहाँ दम्बुल्ला और को रिस्ट्रिक्ट करते हुए, और 163 चाहिए यहाँ पर व्हील ऑफ कैंडी के लिए, विद मॉइस्चर ऑन द ग्राउंड, विद ड्यू अवेलेबल। क्या वो चेस कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। सेकंड इनिंग शुरू होगा तकरीबन 10 मिनट के बाद।
You are listening to Flash News, brought to you by Cricket. Welcome, cricket enthusiasts, to another exciting episode of Flash News, your go-to source for the latest updates and insights from the world of cricket. I'm your host, Isha, and I'm thrilled to have you join me as we dive into some of the most captivating stories making headlines in the cricketing universe. Stay tuned to our platforms for all the exclusive content and behind-the-scenes glimpses from the world of cricket. So, let's get started with our first story. We kick things off with some major confidence boost coming from the Bangladesh cricket team. Shakib Al Hasan, who has returned as the ODI skipper, is all set to lead his team in the upcoming World Cup 2023. Having captained the side during the 2011 World Cup, Shakib's leadership experience positions him as a guiding force. Currently playing for the Gale Titans in LPL 2023, Shakib believes this is the perfect chance for Bangladesh to shine on the global stage. And remember, folks, the journey leading up to the World Cup has seen Bangladesh secure their spot through the ICC Men's Cricket World Cup Super League, finishing third in the points table. The Asia Cup also serves as a stepping stone towards the mega event. The blend of experience and youthful talent in the squad announcement by the Bangladesh Cricket Board adds even more excitement to their World Cup campaign. It's a tale of ups and downs for Sanju Samson as he achieves a significant milestone while facing criticism for his batting struggles. Despite his achievement of completing 6,000 runs in T20 cricket, his batting woes took centre stage during India's T20I series against the West Indies. A series defeat compounded by his low average of 10.67 raised eyebrows among cricket enthusiasts. But remember, every cloud has a silver lining. Suryakumar Yadav's explosive knock might not have salvaged the series for India, but it certainly brought some much-needed fireworks to the team. And hey, credit to the West Indies for their impressive performance throughout the series. It's time for some candid criticism and introspection. Former cricketer Venkatesh Prasad doesn't mince his words as he shreds Team India's ordinary performance in white ball cricket. The T20I series against West Indies brought out glaring issues of inconsistency, lack of strategy, and a hunger for victory. Prasad takes a direct hit at the captain, Hardik Pandya, and the head coach, Rahul Dravid, demanding accountability and a stronger game plan. Friends, this is a wake-up call for Team India to dig deep, find their strengths, and work on their weaknesses. A journey of improvement begins with acknowledging the challenges, and that's exactly what Prasad is highlighting. Cricket enthusiasts, there is hope on the horizon for England's World Cup campaign. Ben Stokes' potential return from retirement has fans buzzing with excitement. And let's not forget the positive update on Jofra Archer's fitness. His ball speed and skills are crucial assets that England aims to harness in the World Cup. It's going to be a thrilling clash when England, the defending champions, lock horns with New Zealand in a rematch of the 2019 final. So mark your calendars, folks, because 5th October will be a day of cricket you won't want to miss. Let's switch gears and talk about some on-ground action. The Maharaja Trophy KSCA T20 tournament has kicked off with a bang. Gulbarga Mystics and Hubli Tigers are setting the stage on fire with their impressive performances. From powerful batting displays to strategic dominance, the tournament promises a whirlwind of excitement. Stay tuned as these teams battle it out for supremacy. And who knows, we might witness some emerging talents making their mark on the cricketing landscape. New Zealand is making a late change to their T20 squad for the upcoming series against UAE. Blair Tickner is stepping aside for family reasons, and Jacob Duffy is stepping in to fill his shoes. It's heartening to see the team prioritize family values and offer support during important life moments. Duffy's inclusion adds depth and experience to the squad,
and we're eagerly waiting to see how this change impacts New Zealand's performance on the field. It's time for some introspection in the Indian camp. Rahul Dravid, the Indian men's head coach, openly discusses the need for better batting depth in the team. Prasad's critical comments echo the concerns raised about the team's performance and strategy. It's a call for improvement and a reminder that growth comes from acknowledging and addressing weaknesses. It's not just about winning matches, it's about building a strong foundation that can weather any storm. So, let's see how Team India rises to the occasion. Now here is an interesting twist. India is exploring the bowling abilities of young batters like Tilak Verma and Yashasvi Jaiswal. While this might seem unconventional, it's a strategy that could potentially add more dimensions to the team's gameplay. We have got Wasim Jaffer backing this idea, although he believes these players need more time to be prepared for the international bowling stage. Who knows, we might witness a whole new facet to their game as they step up with the ball in hand. The excitement is building up for the 2023 ODI World Cup, and guess what? The MA Chidambaram Stadium is all set to host some epic matches. From India taking on Australia to thrilling encounters between Afghanistan, New Zealand, and Pakistan, the stadium is going to be a hotspot of cricketing action. But hey, cricket fans, don't forget that this is just a sneak peek of what's to come. The tournament is bound to bring out some of the most intense and memorable moments in cricket history. Wrapping things up, we head back to New Zealand. Jacob Duffy is stepping up to replace Blair Tickner in the T20 squad for the UAE series. With a mix of young talents and seasoned players, New Zealand is ready to embrace the challenge and fine-tune their strategies for the upcoming T20 World Cup. Cricket fans, that's a wrap on today's Flash News. But before I sign off, remember to keep an eye on the Crickong app for the latest updates and news from the cricketing world. And if you're not following us on social media, well, what are you waiting for? Stay connected, stay engaged, and stay tuned for all the thrilling updates. This is Isha, signing off. Until next time, keep that cricket fever alive. This is Flash News, brought to you by Crickong.
You are listening to Flash News, brought to you by Cricket. Welcome, cricket enthusiasts, to another exciting episode of Flash News, your go-to source for the latest updates and insights from the world of cricket. I'm your host, Isha, and I'm thrilled to have you join me as we dive into some of the most captivating stories making headlines in the cricketing universe. Stay tuned to our platforms for all the exclusive content and behind-the-scenes glimpses from the world of cricket. So, let's get started with our first story. We kick things off with some major confidence boost coming from the Bangladesh cricket team. Shakib Al Hasan, who has returned as the ODI skipper, is all set to lead his team in the upcoming World Cup 2023. Having captained the side during the 2011 World Cup, Shakib's leadership experience positions him as a guiding force. Currently playing for the Gale Titans in LPL 2023, Shakib believes this is a perfect chance for Bangladesh to shine on the global stage. And remember, folks, the journey leading up to the World Cup has seen Bangladesh secure their spot through the ICC Men's Cricket World Cup Super League, finishing third in the points table. The Asia Cup also serves as a stepping stone towards the mega event. The blend of experience and youthful talent in the squad announcement by the Bangladesh Cricket Board adds even more excitement to their World Cup campaign. It's a tale of ups and downs for Sanju Samson as he achieves a significant milestone while facing criticism for his batting struggles. Despite his achievement of completing 6,000 runs in T20 cricket, his batting woes took centre stage during India's T20I series against the West Indies. A series defeat compounded by his low average of 10.67 raised eyebrows among cricket enthusiasts. But remember, every cloud has a silver lining. Suryakumar Yadav's explosive knock might not have salvaged the series for India, but it certainly brought some much-needed fireworks to the team. And hey, credit to the West Indies for their impressive performance throughout the series. It's time for some candid criticism and introspection. Former cricketer Venkatesh Prasad doesn't mince his words as he shreds Team India's ordinary performance in white ball cricket. The T20I series against West Indies brought out glaring issues of inconsistency, lack of strategy, and a hunger for victory. Prasad takes a direct hit at the captain, Hardik Pandya, and the head coach, Rahul Dravid, demanding accountability and a stronger game plan. Friends,
This is a wake-up call for Team India to dig deep, find their strengths, and work on their weaknesses. A journey of improvement begins with acknowledging the challenges. Welcome back to all the listeners on the Crickong Live podcast. I am Dhanush Lavanya, welcoming you all back into this game as the second half, the run chase, will be all set to begin. And it is going to be two batters in possibly Fakhar Zaman and Dinesh Chandimal, I guess, who have come out to open here. And it is going to be nice to see how they are going to start. Prabodh Madhushan is out there to bowl the first ball, and it's not Dinesh Chandimal, it is Mohammad Harris. Mohammad Harris and Fakhar Zaman. So two Pakistani batters, Pakistani duo are out here to bat, and it is Madhushan who is coming out to bowl the first ball, and it is down the leg, and it is a wide to begin with. Definitely took 10 overs to bowl a wide for Wheel of Kandy. But in the very first ball itself, here Pramod Madhushan comes out to bowl. He is also one of the 5 changes in this bowling lineup because today, if you look into the playing 11, 5 changes have been made. The captain himself, Kusal Mendes, who is not there in the playing 11 because Dambulla are kind of finished at the top of the points table, and they, even if they lose this match, they might go maximum into the second position. So since they know that it is either going to be 1 or 2, it was an opportunity for them to utilize their newcomers, youngsters, and was what we can say, because that is what has happened. As Laksan Edrasinhe came at number 3, and he tried to start off well, look good as well, but then got out immediately the moment Vishka Fernando got out. Vishka Fernando got out for 6 runs. And then we saw Hayden Kerr, who has also come back into the side out here. Then Sachina Jayatilake also was one more player who has come into the team. And Pramod Madhushan himself also has come into the team along with Shahnawaz Dahani. So the bowling attack, if you see, apart from Dushan Hemanta and Dhananjay De Silva, everyone else is a newcomer in a kind of a way because they have not featured in the previous 11 and they are going to be playing after a break or so. And this is Pramod Madhushan who is bowling the first over of pace. And spinners are kind of getting some good help is what we can expect because Mujibur Rahman took 2 wickets. Then Chaturanga De Silva, brother of Vanindo Hasiranga, took a wicket as well. Hasaranga himself took a wicket, and Nuwan Pradeep, the pace bowler, also managed to take 3 wickets. This time, bad length, it was down the leg, but there was a fielder placed in the square leg region to stop that delivery. It was almost racing away into the boundary cushions. And Mohammad Harris has rotated the strikes. First runs on the board for himself and Kandy. They are 2 for no loss with Fakhar Zaman on strike. And this has been a good head-to-head also because earlier in the tournament, if we see the first match in the Pallekele leg was between these two sides. And in that game, the target was 156 for the Wheel of Kandy to chase. And they chased off pretty handsomely because Fakhar Zaman and Dinesh Chandimal gave good start. Dinesh Chandimal carried on well. He scored 48 in the end. Then Kaminidu Mendes scored 18 runs. Angelo Matthews and Asif Ali finished off the match with 28 and 16 each. And they pretty handsomely won that contest. And here also they will be hoping to do the same. And Fakhar Zaman, who scored 28 in that game, has started off this game with a brilliant boundary out there. First ball he faces, it was wide off stump, full toss delivery, and he just turned the bat towards the covers region and guided the delivery to just race away into the boundary cushions for a 4. First boundary we are seeing in this contest, and this is coming from the bat of Fakhar Zaman, who definitely has got quite a few starts in the tournament, but apart from that, he hasn't been able to get big scores under his belt, is what we can definitely say. Today, will he get so? That is something that we are confident of because once again, he has managed to hit a boundary. This time, full length delivery bowled into the pads, and he just flicks it across the cow corners region, short mid-wicket region, and gets a boundary out there. Back-to-back boundaries for Fakhar Zaman, and this is definitely a brilliant start for the team that is Wheel of Kandy. 10 for no loss. Right now, last ball yet to come,
and Fakhar Zaman is definitely looking really confident. First one was a low full toss, which he guided it towards the covers and got a boundary. Next one, it was a full length delivery, which he flicked it towards the mid-wicket and corners region for a second boundary. Back-to-back boundaries, last ball coming up, and this is a length delivery bowled outside off stump, and he gently pushes it to the covers region, not getting any runs. First over done and dusted, the score is 10 for no loss for the beloved Kandy team. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickong app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned. Stay curious. स्वागत है आपका। 10 रन बना चुकी है कैंडी की टीम पहले ही ओवर में। मोहम्मद हारिस और फखर जमान, दो पाकिस्तान के प्लेयर्स ओपन करते हुए यहाँ पर कैंडी के लिए, तो वो एक तालमेल अच्छा भी जम जाता है कि आप एक ही देश के लिए खेलते हो, एक ही टीम के लिए खेलते हो, तो जब आप दूसरे किसी टीम के लिए जाते हो तो वो एक तालमेल सा बैठ सा जाता है। और यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह से ये जो कैंडी की टीम है वो दम्बुला की टीम है, माफ कीजिएगा, वो ड्यू के साथ एडजस्ट करती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन्हें तकलीफ तो होने ही वाली है। अगर हम ड्यू ओस की बात करें, क्योंकि पहले पारी के 20वें ओवर में हमने देखा था कि नुवन प्रदीप स्ट्रगल कर रहे थे उस ओस के साथ, और यहाँ पर हमें खबर मिल रही है कि ये जो गेंदबाज हैं प्रमोद मधुसूदन, उन्हें एक वार्निंग दी गई है, एक फ्रेंडली वार्निंग अंपायर अलीम द्वारा, क्योंकि वो जो है डेंजर एरिया में लैंड कर रहे थे, तो एक फ्रेंडली वार्निंग दी गई है। ऐसा कुछ सीरियस नहीं, ऑफिशियल वार्निंग ऐसे दी नहीं गई है, पर ठीक है, एक वार्निंग होती है। और अब यहाँ पर धनंजय फखर जमान को हवा में गेंद, और बहुत ही बढ़िया कैच, लेग स्टंप पे थी गेंद, और वहां पर फखर जमान ने अपने लेग साइड पर बैक अवे करके इनसाइड आउट मारने की कोशिश की थी कवर के ऊपर से, पर वो टाइम नहीं कर पाया और गेंद गई मिड ऑफ की दिशा में। और अविष्का फर्नांडो एक्चुअली थोड़ा लेट उन्होंने पिक किया, पर पहुंचे जरूर, छलांग लगाई और अपने घुटनों के अपने पैरों के उधर उन्होंने वो कैच पकड़ लिया। तो फखर जमान जल्दी आउट होते हुए 8 रन के निजी स्कोर पर 11, 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर कैंडी की टीम। और नए बल्लेबाज अब कौन आएंगे देखना पड़ेगा, क्या वो दिनेश चंदीमल आएंगे या फिर एंजेलो मैथ्यूज आएंगे या फिर कोई और आएंगे। देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद दिनेश चंदीमल आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 163 का लक्ष्य है। और हम जब पारी की कंपैरिजन कर रहे थे तो आखिरी 5 ओवर में हर ओवर जो है, लास्ट ओवर को छोड़कर हर ओवर 10 या 10 के ऊपर गया, तो 58 रन आए थे आखिरी के 5 ओवर में। तो अगर कैंडी को रन्स बनाने होंगे तो उन्हें पावर प्ले और अंत के ओवर्स पे कंसंट्रेट करना होगा, लेकिन उसके पहले उन्हें ये देखना होगा कि विकेट जो है उनके ज्यादा नहीं गए, क्योंकि अगर विकेट गए तो फिर उन्हें ये रन्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि लेकिन उनकी बैटिंग है, क्योंकि मोहम्मद हारिस हैं, दिनेश चंदीमल अभी आए हैं, एंजेलो मैथ्यूज हैं, आशिन बंडारा हैं, फिर उसके बाद आसिफ अली हैं, वनिंदो हसरंगा है और उनके भाई चतुरंगा डिसिल्वा भी हैं, और इसी उड़ाना भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 9 तक बल्लेबाजी है इनकी, उतनी इनएक्सपीरियंस नहीं लग रही है जितनी गॉल की टीम लग रही है। पहली गेंद दिनेश चंदीमल को, दाएं हाथ के बल्लेबाज, और
ये पैड्स पर मिली गेंद और इसे फ्लिक करते डीप मिड विकेट की तरफ। कुछ ज्यादा ही अटेम्प्ट कर रहे थे वहां पर फखर जमान, इनसाइड आउट पहले जाना चाहते थे, बहुत ज्यादा रूम दे दिया लेग स्टंप के और इसलिए उन्होंने मिसक्यू कर दिया मिड ऑफ की तरफ, कवर के ऊपर से जाना चाहते थे। और इस बीच यहाँ पर दूसरा विकेट, 3 गेंदों में 2 विकेट यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा के लिए। हमने ये देखा था पहली पारी में 2 बार होते हुए, पहले तो 10वें ओवर में और फिर 15वें ओवर में, कि दोनों गेंदबाजों ने एक ओवर में 2 बार स्ट्राइक किया हो और यहाँ पर दोनों ही ओपनर्स 3 गेंदों के मध्यांतर में आउट हो गए हैं। एक्चुअली ज्यादा कुछ था नहीं विकेट पे, एक सीधी सी आर्म बॉल थी, उसे बैक जाके फ्लिक करना चाहते थे, एक्चुअली टर्न करना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन गेंद शायद थोड़ी रुक कर आई जिसकी वजह से जो है मिड विकेट के जगह पर सीधा बैक टू दी बॉलर खेल बैठे वहां पर मोहम्मद हरीस। वो एंगल जो है वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे गेंद टर्न होगी, लेकिन गेंद जो है विद दी आर्म आई और उनके अक्रॉस चली गई, और जिसकी वजह से मोहम्मद हरीस जो मिड विकेट पर खेलना चाहते थे खेल बैठे और एक रिटर्न कैच दे बैठे धनंजय डिसिल्वा के लिए। बेहतरीन शुरुआत धनंजय डिसिल्वा के लिए, 2 रन 2 विकेट। और ये यहाँ पर एक सरप्राइज है क्योंकि वनिंदु हसरंगा आए हैं नंबर 4 पर, और क्या सरप्राइज देखने को मिल सकता है ये जानने के लिए हमसे जरूर बने रहिएगा। 151 रनों की आवश्यकता 108 गेंदों में। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crick-On app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crick-On app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crick-On. Our podcast acts as your gateway into the... वनिंदु हसरंगा हार है यहाँ पर अपने बैटिंग करने के लिए नंबर 4 में। जरूर वनिंदु हसरंगा, मैं जरूर सही नाम बोल रहा हूँ क्योंकि हम आखिरकार देखते हैं यूजुअली वनिंदु हसरंगा को नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग करते हुए, नंबर 9 पे बैटिंग करते हुए, पर इस टूर्नामेंट में बैटिंग में भी बढ़िया बैटिंग किया है। तकरीबन 200 रन बनाया है इस टूर्नामेंट में, 193 अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बोलूँ तो, और उसके साथ बॉलिंग में भी अच्छा किया है यूजुअली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर इस सीजन वो बैटिंग में जो परफॉर्मेंस दिया है वो तकरीबन 2-3 मैचेस जितवाए हैं सिंगल हैंडेडली अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस है, और 2 अर्धशतक भी है उनके नाम इस सीजन में। तो इसी कारण अब यहाँ 163 का जो टारगेट है, 2 बैक टू बैक विकेट्स जाने के बाद यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने आए हैं दिनेश चंडीमल के साथ, और अभी कैप्टन और विकेट कीपर इस टीम का यहाँ पर एक साझेदारी की कोशिश करेंगे क्योंकि 3 गेंदों के अंतर दोनों ओपनर्स मोहम्मद हारिस और फखर जमान वापस डगआउट पहुंच गए और यहाँ पर बॉलिंग करने आ रहे हैं एक और पाकिस्तानी बॉलर शाहनवाज दहानी। पहले 2 गेंद बढ़िया थी, पर तीसरा गेंद डाउन द लेग और ये आसान सा फ्लिक करते हुए बाउंड्री ले रहे हैं, पर ये लेग बाइस दे रहे हैं यहाँ पर अलीनदार जो है अंपायर इस गेम का, और जो भी पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका क्रिकेटर्स का एक सम्मेलन होता हुआ इस लंका प्रीमियर लीग में, और ये डाउन द लेग जा रहा था, आसान से थई पैड को ब्रश करते हुए बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुका है। 5 एक्स्ट्रास ऑलरेडी आ चुका है, और हम देखे जब बीलो कैंडी बॉलिंग कर रहे थे तकरीबन 10 ओवर लिए उन्होंने पहली एक्स्ट्रा डालने के लिए, बिल्कुल, पर यहाँ पर उतना कॉन्फिडेंस या उतना डिसिप्लिन नहीं दिख पाया अब तक बॉलर्स के द्वारा जो दम्बुला और का है, क्योंकि अगर हम बॉलिंग अटैक देखते हैं आज दहानी रिप्लेस्ड प्लेयर है, मधुशन रिप्लेस्ड प्लेयर है, और उसके साथ 2 और प्लेयर्स है, जयति रखे जो भी रिप्लेस्ड प्लेयर है, हेडनकर वो भी रिप्लेस्ड प्लेयर है, तो 4 बॉलर्स आपके बॉलिंग लाइनअप में रिप्लेस्ड प्लेयर हो तो जरूर उनका जो रिदम होता है वो ठीक ठाक नहीं होता। हाँ, और चलिए हेडनकर को मैं फिर भी मानता हूँ, वो खेल चुके हैं पहले कुछ मैचेस, पर ये जो बाकी 3 है, और यहाँ पर क्या ये आउट है, क्या ये कैरी किया है, क्योंकि यहाँ पर चंदीमल कहीं नहीं जा रहे हैं
और यहाँ पर आउटसाइड एज तो है, पर जी हाँ धनंजय डिसिल्वा शायद कह रहे हैं कि टप्पा खाकर गई है गेंद, पर एक लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और उस पर प्रहार किया दिनेश चंदीमल ने। एक बाहरी किनारा लगा तो था और कीपर के मुझे तो एक क्लियर कट कैच लग रहा है विकेट कीपर द्वारा, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो उन्होंने अपील नहीं, क्योंकि अभी ओके धनंजय डिसिल्वा शायद कह रहे थे दहानी को कि आउटसाइड एज वहां पर था ही नहीं, शायद वो मूवमेंट ही था। हमें इसका अल्ट्रा एज देखना पड़ेगा, पर ये एक मेडन हो सकता है शाहनवाज दहानी के लिए, क्योंकि उन्होंने भले ही वो चौका दिया हो पर वो 4 लेग बाइज थे, और जी हाँ मेडन ही है। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर उसे कट कर दिया सीधा पॉइंट के दिशा पर, तो दहानी के लिए तो ये मेडन माना जाएगा। लेकिन इस ओवर में आए हैं 4 रन, 3 ओवर के बाद 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर कैंडी की टीम 163 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crick-On app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crick-On app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crick-On. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned. हेडन कर आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए अभी इस चौथे ओवर में, और तकरीबन 61 विकेट लिया है इन्होंने इनकी करियर में, और पिछले 2-3 साल में ऑस्ट्रेलिया में नाम कमाया है केएफसी बिग बैश में। और अभी पहले ही गेंद में एक बढ़िया सा वेलकम करते हुए वनीदु हसरंगा अपने इनिंग्स का भी पहला गेंद है ये, और लेंथ डिलीवरी था आउटसाइड ऑफ स्टंप और सीधा एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर एक बढ़िया सा चौका मारते हुए, लॉफ्टेड शॉट, परफेक्ट एग्जीक्यूशन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और ये 4 रन पे जाता हुआ तीसरा चौका इस इनिंग्स का यहाँ पे बी लव कैंडी के लिए। और जरूर अभी इन दोनों के बीच एक साझेदारी की कोशिश होगी और हो रही है अभी तक। 20 रन पे 2 अभी बी लव कैंडी, और एक बढ़िया सीजन हुआ है हसरंगा के लिए। बॉलिंग में भी 11 विकेट, बैटिंग में तकरीबन 200 रन, और अपने करियर में भी 200 T20s भी खत्म किया इस सीजन में। और बहुत सारे जो माइलस्टोन्स है वो इस टूर्नामेंट में कंप्लीट किया वनीदु हसरंगा ने। और ज़रूर यहाँ पर आप लेंथ बॉल देते हो किसी को भी, अगर वनीदु हसरंगा जो इतने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और तकरीबन हर 3 बॉल में एक चौका मार रहे हैं, तो ज़रूर इस टूर्नामेंट में बहुत ही एक बढ़िया बैटिंग करते हुए। यहाँ पर टाइमिंग नहीं हुआ है और कैच करने की कोशिश था वहां पर चांस मिस होता हुआ और दोनों फील्डर्स के बीच वो बॉल गिरी। एक फील्डर ने तो डाइव किया, वो जो है अविष्का फर्नांडो, मिड ऑफ के फील्डर, पर उनके हाथ में नहीं लगा। पिछले बार एक बढ़िया सा कैच लिया था फकर जमान का, पर यहाँ पर वो सक्सेस नहीं मिल रहा है मिड ऑफ रीजन पे जो खड़े हैं अविष्का फर्नांडो। और एक बढ़िया सी एफर्ट जरूर है, पर 1 रन मिल जाता है और स्ट्राइक पे है वनीदु हसरंगा। एक बार 6 रन आ चुका है। और इस सीजन में हम देखें तो हेडन कर को क्यों वो अंदर बाहर हुए हैं, क्योंकि जब भी उनको मौका मिला है उस समय वो बहुत ही एक्सपेंसिव हुए हैं। आज भी हम देख सकते हैं पहले 4 गेंदों में 7 रन देते हुए। जी हाँ बिल्कुल, मोर ऑफ अ बैटिंग बैटर हु कैन बोल टाइट है हेडन कर। और हम वनीदु हसरंगा की बात करें तो पहले 2 मैच में इस सीजन में सिर्फ 18 रन बनाए उन्होंने विद द बैट। फिर तीसरे मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई, लेकिन उसके बाद 4 मैच में उन्होंने 175 रन बनाए हैं। और वो 4 मैच में से पहले 2 में उन्होंने अर्धशतक लगाए, 52 नाबाद 64, फिर जाफना किंग्स के विरुद्ध 19, और पिछले मैच में कोलंबो स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट यानी कल उन्होंने 40 रन बनाए। तो काफी अच्छे फॉर्म में है और शायद उसी कारण की वजह से उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है। और सही बात है, अगर आप फॉर्म में हैं तो आप फॉर्म वेस्ट क्यों करना चाहेंगे। और पिछले ओवर मेडन जाने के बाद, चलिए वो मेडन तो नहीं मानेंगे हम, 4 रन जाने के बाद इस ओवर में
अभी 8 रन आए हैं, 4 सिंगल और 1 चौका। और यही होता है, यही चाहिए होता है। अगर आप पहली गेंद पर चौका या छक्का लगाते हो, बाकी गेंदों पर आपको रन्स लाना जरूरी होता है, वो डॉट बॉल आप नहीं ला सकते। और वही कोशिश करते हुए यहाँ पर वनिंदु हसरंगा और दिनेश चंदीमल। आखिरी गेंद हेडन करके पहले ओवर की लेंथ गेंद, और यहाँ पर मौका बन सकता है। जी नहीं, वनिंदु हसरंगा ने बैक अवे किया और इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बदले का भारी सिरा लिया। पॉइंट के ऊपर से चली गई गेंद और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए हेडन खर ना खुश, क्योंकि किस्मत उनके साथ नहीं थी। लेकिन स्टैटिस्टिशियंस जो है वो सिर्फ ये देखेंगे कि हेडन कर का पहला ओवर है वो 12 रन के लिए किया, एक भी डॉट बॉल नहीं, और वो एक चिंता का विषय जरूर है। 28 2 विकेट के नुकसान पर बी ऑफ कैंडी 135 रनों की आवश्यकता 96 गेंदों में। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious. And 4 ओवर हो चुका है यहाँ पर। अभी प्रमोद मधुसूदन अपने दूसरे ओवर बॉलिंग करने के लिए पहले ओवर में 10 रन दिया था और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो खराब लाइन वो फॉलो कर रहे हैं। पहले ओवर में भी तकरीबन 2-3 बार डाउन द लेग बॉलिंग किया था। अभी भी पहले गेंद में डाउन द लेग बॉलिंग करते हुए एक 2 रन लेते हुए वहां पर। और यहाँ पे जरूर ये क्या हो रहा है, ये वो बैटरी चार्ज, जैसा पीएसएल में मैं कह रहा था ना कि वो महिला या पुरुष जो भी है वो भागेंगे, और वहां पर वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड में वो बैटरी चार्ज जब तक फुल चार्ज नहीं होता, वो बैटरी फुल चार्ज होने के पहले आपको भागना है और आपको वो पोस्ट तक पहुंचना है। वो था पीएसएल में। यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे वो बैटरी चार्ज वाला एस्पेक्ट ही नहीं दिख रहा था। और इसी बीच यहाँ पर एक हैक कर दिया है चंदीमल ने। बिल्कुल भी सुंदर शॉट नहीं था, लेकिन हमें सुंदर रनों के लिए वैल्यू नहीं मिलती, हमें रनों के लिए वैल्यू मिलती है। सुंदर या कुरूप उससे फर्क नहीं पड़ता। एक लेंथ गेंद थी प्रमोद मधुसूदन द्वारा, गेंद खराब नहीं थी, ऑफ स्टंप और मिडिल के बीच में थी, और चंदीमल ने एक्चुअली स्लोअर गेंद थी और चंदीमल ने उसे उठाकर खेलने का प्रयास किया मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन बैट उनके हाथ से घूम गई थोड़ी और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और मिड विकेट के ऊपर से चली गई 4 रनों के लिए। बिल्कुल भी अच्छा शॉट नहीं, लेकिन अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो चौका मिल गया है दिनेश चंदीमल को और 129 रनों की आवश्यकता अब कैंडी को 94 गेंदों में। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर क्राउड आती हुई, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग भी अब समाप्त होने आ रहा है। इसी हफ्ते समाप्त हो जाएगा, 20 तारीख को फाइनल है। तो जब भी आपको पता है कि आपके ही कंट्री का टूर्नामेंट है, नंबर 1 टूर्नामेंट है, वो समाप्त होने आ रहा है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत जो क्राउड है वो आ जाती है और वो अच्छी बात है, ऑडियंस के लिए अच्छी बात है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छी बात है। और अगर ऐसे में आपके लोकल प्लेयर्स या आपके नेशनल प्लेयर्स परफॉर्म करें तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, कैंडी के सपोर्टर्स चाहेंगे कि कैंडी जरूर जीते, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर फखर जमान और मोहम्मद हारिस वो दोनों हाफ सेंचुरीज मारे, लेकिन उससे भी बढ़िया बात ये हो जाएगी कि अगर उनके जो नेशनल प्लेयर्स है, यानी दिनेश चंदीमल, वनिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज, आशिन भंडारा, ये लोग अगर खेल के अगर मैच जिताए तो बेहतर होगा फैंस के लिए भी और श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए भी। हाँ जरूर, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, इसीलिए वनिंदु हसरंगा अपने श्रीलंका टीम के हेलमेट पहनकर बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो इंटरनेशनल टीम के क्वालिटी प्लेयर हैं और इस टूर्नामेंट मुझे लग रहा है वो अपने आप को एक ऑलराउंडर की तरह देख रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में जो बढ़िया बैटिंग किया है उन्होंने, अभी आगे जाकर वो अपने आप को एक ऐसे क्रिकेटर मानेंगे कि नंबर 5 नंबर 6 में आकर एक सपोर्टिव बैटिंग रोल ले सकते हैं, स्लॉग ओवर्स में भी रन मार सकते हैं। वो शायद उनके कोशिश होगा आगे जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। और यहाँ पर प्रमोद मधुसूदन जैसे खिलाड़ी हो जो श्रीलंका के लिए 2-3 मैच खेले हैं पर उसके बाद वो परफॉर्मेंस नहीं किया है और इसके कारण टीम से बाहर आ चुके हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है टीम में वापसी करने की।
और पर यहाँ अगर आपको वापसी करनी पड़े तो आपको पहले रन्स रोकना पड़ेगा, उसके बाद विकेट्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्रमोद मधुसूदन दोनों ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर में 10 रन दिए थे, अभी 5 गेंदों में 9 रन दिया है। आखिरी बॉल यहाँ पे आती हुई, और सभी जो प्रेक्षक है यहाँ पर अपने अलग ही मूड में है, कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को। जी हाँ, और क्रिकेट का मतलब ही वही है कि आप एंजॉय करें, और ये तो लोकल लीग है, ऐसा भी नहीं है कि आप श्रीलंका वर्सेस भारत या श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान खेल रहे हो, तो देशों के बीच की मैच नहीं है। आप क्रिकेट को एंजॉय करें, स्पोर्ट को एंजॉय करें, और आप एंजॉय करेंगे तो ही तो माहौल बनेगा। इसी बीच लेंथ गेंद धीमी गति की, वनिंदु हसरंगा ने बैक अवे किया और मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन मिस टाइम किया, और अच्छा हुआ कि मिस टाइम किया, क्योंकि अन्यथा वो मिड ऑफ के हाथ में ही कैच थमा बैठे। पर हाँ, आपने सही कहा, दर्शक इतनी बड़ी दीर्घा में तो नहीं आए हुए, लेकिन जो आए हुए हैं वो जो डीजे गाना बजा रहा है वहां पर, उस पे ग्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये देखने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया नजारा है। 5 ओवर के बाद 37, 2 विकेट के नुकसान पर कैंडी 163 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. 37 for 2 as Shahnawaz Dhani comes back for his second over. His figures read none for none, but that's not entirely true, because he had conceded 4 runs of his first over, but because it was those 4 runs were of leg byes, it's counting as a maiden. However, he now officially concedes his first run of the day. A length ball down the leg side, a bit too straight. Dinesh Chandimal just helps it off his hips, but of the inner half, and gets a couple of runs as Short Fine gets to the ball and keeps the batters to a couple. So the final over of the power play, and both Chandimal and Hasaranga would want to maximize this, try and get to 50 by the end of the power play, and then look at attacking the remaining 10 odd overs. One difference which we didn't see in the first innings and might see in the second is the dew factor. We saw a fair bit of dew when Nuwan Pradeep was bowling in that 20th over, and once dew is setting in, it's not going to lessen. It's either going to increase or it's going to remain the same. So it's not going to be an easy task for the Kandy spinners, because as of now only Dhananjay De Silva has bowled spin, and majority of their bowling is kind of untested in their uncharted territory, beg your pardon. And it'll be interesting to see how the likes of Dushan Hemanta, Sachita Jayatillake bowl with the wet ball. Backs away, Wanindu Hasaranga goes over the offside. Has he cleared the fence? That's a magnificent shot from Wanindu Hasaranga. A short ball outside the off stump. Hasaranga backs away and clears cover for half a dozen. 46 for 2. What a shot! It was on a length, and he just gave himself room to the leg side and pummeled it over extra cover for half a dozen. 46 for 2. 117 more needed now from 87 deliveries. The gap between the runs required and the balls remaining is 29. What's coming up next from Dhani? Well, he doesn't like the look of that shot. He is going to fire it in. Is it going to be a yorker? Is it going to be another bouncer to Hasaranga? Here it charges in. It's a slower delivery, an anti-climax, but a bit too straight. Hasaranga just gets inside the line and tucks it towards square leg for a single. 47 for 2 then are the beloved Kandy, and I'm not so sure that there is a fair bit of run rate difference between the two sides right now. Both are 1 and 2 respectively. Dambulla is 1 and Kandy are second, but there is a roughly 0.20 difference in the net run rate. So it will be, maybe if they can win by the 18th or 19th over, then 18th or 19th over, then I think that Kandy would topple Dambulla. Otherwise, even if Kandy win this match, it will be Dambulla who will stay at number 1 with 10 points, and Kandy will be second with 10 points. It's just that thing. If they can win by the 18th over, they can possibly topple Dambulla. But again, it actually doesn't matter, because this is just a dress rehearsal for the qualifier one. Now, there's another scenario
that if not the Jaffna Kings, if the Colombo Strikers lose tomorrow to Gaul Titans by a fairly big margin, and if Beal of Kandy lose tonight, then you never know, possibly an outside chance that Gaul Titans might come second. That's the only outside chance. But otherwise, if Beal of Kandy win tonight, then qualifier 1 is decided, 100% decided. It will be between Dambulla Aura and Beal of Kandy, because both of them will be on 10 points. Final ball of the power play, 10 runs of this over so far, and the last delivery is being driven by Dinesh Chandimal through mid-off straight to the fielder. He wants a single, Hasaranga sends him back, and that's the way the over ends as well. 10 runs from the over, 6 gone, 47 for 2 are the Beal of Kandy chasing 163 for a victory. Will the fielding side think about a timeout now, or will they go for a timeout later on? No, I don't think they are going for a timeout now. 116 needed of 14 overs. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crick-On app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crick-On app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crick-On. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned. Stay curious. सचित जयतिलक के यहाँ पर आ रहे हैं अपने दूसरे ओवर बॉलिंग, फर्स्ट ओवर बॉलिंग करने के लिए. लेग स्पिनर है और एशली नर्स की तरह इनकी बॉलिंग एक्शन है देखकर, और इनकी जो फिजिकल प्रेजेंस वो भी एशली नर्स की तरह बड़े खिलाड़ी है और मस्कुलर खिलाड़ी है, पर लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं वही यहाँ पर मुझे शॉक करते हुए. पर वनिंदु हसरंगा को यहाँ पर शॉक करके वापस भेज रहे हैं 19 रन पर. गूगली डिलीवरी यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर पिच होकर अंदर आई और वनिंदु हसरंगा बैकफुट में जाके कट करने की कोशिश की, पर यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया. यहाँ पर इनसाइड एज होकर सीधा स्टंप पे लगती हुई और दूसरे ही गेंद में सफलता मिलता हुआ यहाँ पर बॉलर जय तिलके को. हसरंगा जा रहे हैं यहाँ पर 19 रन बनाकर और स्कोर होता है 47 पे 3 बील ऑफ कैंडी की. Yes, they say give a taste of your own medicine. Wanindu Hasaranga gets most of his wickets through googlies, and he has been dismissed by a leg spinner of a googly. Well, huge wicket in the context of this run chase. Wanindu Hasaranga was looking like almost like a demon to the opposition, because he was not stopping at anything. 19 from 13 deliveries, and no leg spinner. Of course, no batter likes to be dismissed in the first place, but no spinner likes to be dismissed by a spinner. And let's scrutinize it further. No leg spinner likes to be dismissed by a leg spinner, and no leg spinner likes to be dismissed by the stock ball of what he has by the other spinner. So it's all in the wrong side for Wanindu Hasaranga, and this might just open up a little bit of trouble side for the Kandy side. This partnership, which was looking threatening, 35 from 26 deliveries, has been broken, and now Angelo Matthews comes in. Has not exactly lit this tournament on fire, but he's been okay. He's been doing fairly okay. If we look at his last few performances, 11, 22, 40, 28 not out. So it's not as if he has done really well, but he's not done poorly either. However, yesterday he went for just 11, and before that just 22. But before that, in Palekele, he scored 40. So in Colombo, if you look at his returns, 25, 2, 22 and 11. Not quite having been accustomed so far to the wickets in Colombo. So Jay Tilake has begun with a bang, well, first delivery to Angelo Matthews, traditional googly. It's been driven all along the ground towards Hayden Kerr at long off for a single. So yes, Dhanush, you are right. He does look like Ashley Nurse does. Jay Tilake is stoically built. Just that his batting, we are yet to see his batting, whether his batting can be as effective as Ashley Nurse. But for now, he can celebrate the wicket of Wanindu Hasaranga. Chandimal now on strike to
Jay Tilake, or it's a leg spinner, but outside leg stump. Chandimal looked to flick, but missed and got hit on the pads. This has been a brilliant start for Jay Tilake, and maybe one of his earlier games in the Lanka Premier League is what I presume, and he definitely has made an impact. This time also, Chandimal tried to go to the back foot and cut it, but he finds success. And a dot ball for sure, but it went to the fielder in the point region. And this has been a brilliant over, just a single run and a wicket of Vanidu Hasaranga. And definitely the 163 target is becoming competitive as the spinners are getting some help out there. Single of the final delivery, and it's a brilliant start for Jay Tilake in this game. 49 for 3 after 7 overs are the beloved Kandy side. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickon... Spin from both ends now as Dushan Hemantha comes on to bowl his leg spin now. So we have got leg spinners everywhere. Normally you don't have same kind of spinners in a T20 setup, but remember Dambulla have made 5 changes today. It's like they wanted to give chance to everyone who has been warming that bench. Short ball to start off with from Jayanta, and Dinesh Chandimal throws the kitchen sink at it, crashes it through the covers, and the ball just escapes the man at short extra cover. But long off had a fair distance to cover to his left. But however, the batters could manage just a single. I thought there was 2 available on there, but clearly the batsman thought something changed. So here we have, if Kandy can chase this target down in 16.3 overs, then they can top the table. On the flip side, if they are bowled out for 111 or less, then whoever wins tomorrow can actually leapfrog them and finish second in the points table. So I think 99 balls, so that's in 55 balls, 112 to score 112 is probably a bit out of the window, but 111 all out, well, who knows, that might be on the cards. 7 wickets for 60 odd runs, that could be on the cards. So Gaul and Colombo could be praying for that. Now this one has almost gone all the way. Flighted delivery outside the off stump. Hemantha is not happy with the fielder out there. Chandimal gets down and sweeps it against the turn, wide of the man running to his left at deep mid wicket for a boundary. I don't think that the man at deep mid wicket had any chance. It was swept very nicely and powerfully by Dinesh Chandimal. The question that Hemantha is asking is, why are you standing so ahead of the ropes? I think it's easier to say as an afterthought, but that was a very, very good shot. Yes, it was a brilliant shot and much needed one, because definitely they had lost the wicket of Hasaranga and they were being put into pressure. And at this moment, it has to be Dinesh Chandimal, an experienced player of the Sri Lankan cricket, a veteran who has been a part of this for over a decade. And in this game, he needs to do some impact. And I guess has this buggy camera come inside the ground? No, it's outside. No. It's outside. And the ball has now been hit towards the sweeper region for a single, and this is the final ball. No one more ball remaining, and this over by Hemantha has definitely been good. 8 runs and a boundary in that as well. So definitely they will be happy to get 8 runs and end this well. Last ball coming up, and Chandimal hits it down the ground and he beats the fielder, and he gets another boundary. 12 from it. 61 for 3 after 8 overs. 102 required of 72. Are we going to the timeout? That is something that we need to see. No, we are not going to the timeout yet after 8 overs. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app.
Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickong app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickong. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickong accompany. Up, and away! Jay Tilake loses control of the ball and bowls a full toss, and Angelo Matthews takes full toll of that full toss as he pulls it over mid-wicket for half a dozen. Well, that clearly slipped out of the hands of the bowler, which indicates that there is due. That leg spinner didn't quite land at all, and it was, well, that's the sky. 82 meters on that side. Magnificent hit from the senior statesman of Sri Lanka. That's Angelo Matthews, 67 for 3. What's the next one coming up? Oh, beautifully bowled by Jay Tilake, but no slip, and Matthews gets the advantage. The quicker one, shorter one, leg spinner, Matthews goes. But the ball comes on way too quicker than his anticipation, and he's cramped for room, but he goes through with his shot. The ball takes the outside edge and flies straight to first slip, but it is unmanned, and as a result, there is no one to catch that, and the ball races away to the third man fence, deep third fence. I would like to correct myself. 10 runs of the first 2 balls of this over, and now 92 needed from 70 balls. That's exactly what the required run rate is. It's now come down under 8. Shorter delivery, the googly punch down to long off for just a single. 91 needed from 69. 7.9 is the required run rate. Kandy well in control of this run chase, and this partnership has moved on to 25 from just 13 deliveries. Yes, brilliant recovery, we can say, because they lost the wickets in a hurry, and they have now managed to kind of get a partnership out here, and 2 level-headed cricketers, veterans of the game of Sri Lanka, are definitely kind of bringing back the Kandy team into this run chase. 91 required of the 68 deliveries, and a couple of more boundaries in the remaining 8 deliveries of the first half of this game will definitely help them to go to the second half of the match with confidence. And now the comeback has been good as well by Jay Tilake, because he gave 6 and a 4 in the first 2 balls and then a single. But after that, 2 dot balls. Will he end on a positive note? Yes. 3 dot balls in a row, and the score is 72 for 3 after 9. And now they will go to the 2.5 minute strategic timeout.
much. Welcome back. As we now look forward to the run chase. 72 for 3, 91 needed from 66 balls. And this partnership, 25 from 16, has kind of put Kandy in the ascendancy. And with Angelo Matthews and Dinesh Chandimal out in the middle, they should find it a little bit easier. Hayden Kerr now comes to bowl his second over. Fine bouncer, but down the leg side. Matthews helps it down towards fine leg. There's a bit of a misfield, but the batters are content with taking just that single. So 73 for 3. Then Hayden Kerr, unimpressive in his first over, and the bowling option so far. Pramod Madhushan, 2 overs 19, expensive. Shahnawaz Dhani, 2 overs 10, okayish. Hayden Kerr, unimpressive. Sachita Jayatilake, impressive, 2 overs 13, 1 wicket, while Dushan Hemanta has bowled just that 1 over, 112. But just looking at the bowling options, 1 off spinner Dhananjay De Silva, 2 leg spinners Sachita Jayatilake and Dushan Hemanta, 2 right arm seamers Madhushan and Dhani, and 1 left arm seamer Hayden Kerr. Just wondering, do they have any other option if Hayden Kerr or Pramod Madhushan need to be replaced? And I'm not sure, maybe they might go into Lakshan Ediri Singh. Does he bowl? I'm not sure. And the other option is perhaps Alex. I know Alex Ross does not bowl. So they are short of bowling options, are the Dambulla Aura. And today, yes, Lakshan Ediri Singh does bowl off break. So he can be used as a surprise weapon if the Dambulla Aura wanted, because as of now, Beloved Kandy are extracting lot of love from the surface, from their fans, and towards this particular match. Slow delivery outside the off spin, driven towards long off for a single. 74 for 3, 89 more needed now from 64 deliveries. Angelo Matthews on strike, comes down the track and lofts it beautifully over mid-off, who is inside the circle and finds the gap and long off for a boundary. 78 for 3. Hayden Kerr is proving to be very, very expensive. It was a slower delivery, but Matthews picked it, came down the track, got the pitch of the ball and lofted it as clean as a whistle over a long off, as over mid-off rather, and he has got a boundary. Well, we need to look into the recent game performance of his in this tournament, because I feel every time I see this lad coming out to bowl, he is being smashed across like a bully, like a child being bullied. And if we see his performance in this tournament, we can say that he has played 6 games for them, and he has been 1 for 24, 1 for 21, 1 for 28, 1 for 16, and 35 runs. And I guess even though it is 1 for 24, 25, and all these, he might have not bowled all the overs. Yeah. So that is what we can say, that he has been expensive around that. He has that 8 to 9 runs economy on a consistent basis, and today he has been taken for runs. And this day for him has not worked out well, and that is why after getting 5 matches of chance and you kind of failed to bowl all the 4 overs, even in one of those, it is definitely the team are going to find someone else in place of you. And he, in this ultimate game of this league stage, more like a dead rubber contest, he's just making sure to come back strong, but that is not working. He looks to me like an Australian version of a Sam Curran, but definitely he kind of lacks the Sam Curran ability of bowling in the power play and in the slog overs. And now he's bowling the middle overs more like, and he has not been able to impress that much. 10 runs coming from this over, 80 for 3, and 83 runs required. So a single has been taken in the final delivery. So halfway mark is the match, 10 overs done. And even in the run chase, we are halfway mark almost. 82 required of the last 10 overs. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crick-On app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crick-On app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crick-On. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crick-On accompany you through every delivery, boundary,
and game-changing moments. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches. 81 for 3, and at the halfway mark, both the teams are at exactly the same position, 81 for 3. But while Dambulla were going on a recession, Kandy are on the upward side, in spite of losing 2 wickets in 1 over, in the very second over. Well, Kandy are on the surge, and even after the 3rd wicket down, the influx of Matthews, I have to say this, the moment Matthews has come onto the field, there has been a little bit of positivity around, and that has rubbed on to Chandimal as well. He has ensured that even though they lost that 3rd wicket of Vanindu Hasaranga, there was no looking back. The progress was always ahead. Now, this was a period from over number 7 to over number 15. Dambulla scored just 51 runs and lost 5 wickets. As opposed to that, in the last 4 overs, Kandy have scored 35 runs and lost just that 1 wicket, and that's why the two teams are on par at this kind of moment. But after 15 overs, I'm sure Kandy will run away way ahead of Dambulla, because Dambulla were 104 for 5 at the end of the 15th over, unless they can find some kind of an inspiration now, Dambulla, to bowl to pick up some wickets. And interestingly, well, Angelo Matthews so far in this innings has faced just 1 dot ball, 22 not out from 12 balls, and he has faced just 1 dot ball. That's how his effect has been, a positive influx over Dinesh Chandimal and over this innings as well. 80 needed from 56 balls. Jayatilake trying to curb Matthews now, tossed about the off stump. Matthews swings hard, it gets into the inner half of the bat towards short fine leg. The fielder gets to the ball, but while trying to dive and stop it, the ball hits his knee and deflects further towards deep backward square leg, and by the time Ben McDermott gets to the ball, the batsmen take the extra run. That is the 2nd run. So it's 85 then for the loss of 3 wickets, 78 needed from 55 balls. Final delivery of the 11th over, as Jayatilake bowls a googly now to Matthews, who's driven it straight down the ground through mid-off. Has he cleared long off? No, very, very good fielding by Hayden Kerr, keeping the batters to 2nd. But 6 runs from the over, 11 gone, 87 for 3. And as Hayden Kerr hurt himself, he is clutching his ribs, his left rib there, and it was a very, very good effort. And it's not an injury, he's just rubbed his side over the ball, and that's why it's paining him. So thankfully it is not that serious. 11 gone, 87 for the loss of 3 wickets, 76 needed from 54 balls, and at this stage the Dambulla aura for 85 for 3. So for the first time in this match, the beloved Kandy are ahead of the Dambulla aura. The next batters to come, Ashin Bandara, Asif Ali and Chaturanga De Silva. Isuru Udana can bat as well. So they have got a few. All the remaining ones are hitters. They can hit, and once the required runs come under 50, then it's like a free for all party, and then anyone can come and have a tonk at the bowling. This partnership is now worth 40 from 28 deliveries, and it has gone at a very, very good pace. And well, Dhananjay De Silva now is on to bowl to try and stop this, or try and get a wicket out of somewhere. Yes, he wants to take a wicket and break this partnership, because both these batters are kind of set themselves well, and if they get 2 more overs for sure, they will kind of run away the game towards the beloved Kandy team. And it's been a brilliant season, I will say, for them, because they started off on a low note. They lost their first 2 games that they played in this very venue here in Kandy, and then they kind of lost their way after that, and then they kind of came back strong in the 3 games that they played in their home ground in Palekele. And coming back here, they have managed to win 1 of the 2 games. So out of the 4 games that they have played in Colombo, they have lost 2. 3, I have to say. But here, the 4th wicket will go down, and the moment I ask one, we have got one. Dhananjay De Silva has softly dismissed Angelo Matthews here. Angelo Matthews wanted to push it towards the long on region and get a single. The ball came a bit late. He went for the shot way too early, and that was a simple cotton ball for Dhananjay De Silva, and he brings a breakthrough like how he did in his first over. He got 2 wickets in his first over, and now also he gets a wicket out here. Angelo Matthews goes for 26 of the 15 deliveries, 88 for 4.
are the Beloved Kandy team, and this is going to be crucial now, important now for the Beloved Kandy side, because they have lost a majority of their major batters in the side. Two batters that were level head players in Angelo Matthews and Dinesh Chandimal. Out of them, we are seeing Angelo Matthews going back right now, and it is going to be challenging for the rest of the lineup that is going to be coming soon. And let us hope that this game spices up even more, because at the moment we can see this game spicing up a lot. There is Ashin Bandara, there is Chaturanga De Silva, there is Asif Ali still to go for those runs, and I guess currently it is Ashin Bandara who has come out to bat. A left-handed batter is coming out. I don't have an idea on how Ashin Bandara is. Is he a left-hand batter? Is he a right-hand batter? Is something that we need to see. He's a right-handed batter. So now it is Chaturanga De Silva, brother of Manindo Hasaranga, who has come out to bat. And I guess, Karthik, we are having something in our tongues for sure. Whatever we ask, we are getting. Why? What happened? I asked for a wicket, here a wicket came in. Oh, okay. And it's Dhananjay De Silva who has taken it in. It was a delivery which spun in to Angelo Matthews, and he just pushed it tamely. It was a soft dismissal, to say the least. And Dhananjay De Silva has come in. He required his side desired a wicket, and would you believe it? He has taken 3 wickets. And all the 3 out of the 4 wickets have gone to Dhananjay De Silva. And these are his figures as of now. 1.3 overs, no maiden, 4 runs and 3 wickets. This is sensational bowling by Dhananjay De Silva. And the elder brother of Manindo Hasaranga has some work to do. 74 needed from 51 balls. They are ahead. They are ahead of where Dambulla Aura were at this stage, but they are losing out on wickets as well. I just mentioned that they would be ahead of Dambulla Aura by the end of the 15th over, and unless Dambulla Aura can find a way to pick up wickets, well, they are going to be behind the 8 ball. And as soon as I said that, DDS finds a way to pick up a wicket, and it is of the man who was trying to turn things around. 26 from 15. It is a very enterprising partnership between Chandimal and Matthews. 41 in just 32 deliveries, and with every passing wicket, that gap becomes very significant. The moment the gap is above 20 and you have less than 5 wickets in hand, then you have a chance. Now this is in the air, and it's taken again. Dhananjay De Silva, for the second time in this match, he picks up 2 wickets in an over. First Matthews, now the elder brother Chaturanga De Silva. Flighted delivery outside the off stump, spinning away from the left-hander. Chaturanga De Silva gets down and tries to play that slog sweep. He plays it but doesn't quite get a good connection. It is a longer part of the ground, and it's a fairly simple catch for Ediri Singhe, one of the 5 changes who has been who have featured in the Dambulla side. And now we are talking 90 for 5. Where were the Dambulla side at this stage? That is after 11.5 overs. We'll let you know that in a moment. The Dambulla Aura were 86 for 3. So they are 4 runs behind, but 2 wickets ahead. 73 of 49. In walks Asif Ali, and he has got some work to do. Now this batting lineup can bat. They have Ashin Bandara. Asif Ali has come out. Isuru Udana can bat as well. So they still have 3 more batters, but they need to take care of the spinners. Dhananjay De Silva has got a 4 for now. 4 for 5. Jai Tilake 1 for 19, and these 2 have gone for 24 runs in 4.5 overs and picked up 5 wickets. What camaraderie between the 2. Now final delivery of the 12th over. Dhananjay De Silva coming from right arm over the wicket, around the wicket. We'll have to wait and see, to Asif Ali. No slip in place, strangely round the wicket, and it's on the pad. Just walked away to the left of short fine leg, and it will be a single. Excellent over from Dhananjay De Silva. 4 runs and 2 wickets from the over. Well, Beloved Kandy have been hit again by the Dhananjay curse. 2 wickets from that over. 91 for 5, 72 needed from the last 8 overs. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crick-On app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crick-On app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado.
Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crick On. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned. Stay curious. One player is bowling like he is bringing his own pitch and he is doing his job. That is the captain Dhananjay De Silva. 4 for 6 is what his numbers read in 2 overs that he has bowled. And the other bowlers, they are kind of not finding the similar success. And they would be hoping to get something of what he was getting with the ball. Dhananjay was getting with the ball. As here it is Hemantak bowling his second over. He went for 12 runs in the first one, and this over he starts off with a couple of singles out there, 93 for 5. I was just thinking the match was going on well when Matthews and Chandimal were batting, and if they continued that, they would have definitely thought of chasing this down pretty easily. But now with 2 back-to-back wickets going, I guess this is going to spice up and will become a nail biter until the end. बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है क्योंकि 69 रनों की आवश्यकता है 45 गेंदों पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर आसिफ अली भी आउट हो गए तो फिर यहाँ पर बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है बील ऑफ कैंडी को, क्योंकि दिनेश चंदीमल अभी वो वैसे चंदीमल नहीं रहे कि वो काउंटर अटैक कर सके। हाँ, वो अटैक कर सकते हैं, बट आज भी देखिए वो 100 के स्ट्राइक रेट से भी नीचे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए अभी हो गई 100 की स्ट्राइक रेट, छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उस पर प्रहार कर दिया है पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। तो एक बाउंड्री आता हुआ और काफी अंतराल के बाद एक बाउंड्री आता हुआ, जो पिछला बाउंड्री था वो था 9.3 ओवर में, और अब 12.43 ओवर हो गया, यानी 3 ओवर के बाद एक बाउंड्री आया है, क्योंकि वहां पर प्रेशर लगाया जा रहा था धनंजय डिसिल्वा द्वारा और जय तिले के द्वारा। पर यहाँ पर हेमंता को ये रोकना होगा, यहाँ पर रन रोकना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि प्रेशर जो है वापस ट्रांसफर नहीं होता अपनी ही टीम पर। अगली गेंद दुष्यंता की, और इसे स्लॉक स्वीप कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ, और गैप भी ढूंढ लिया है। बैक टू बैक बाउंड्रीज दिनेश चंदीमल के लिए। तो पिछले ओवर में बैक टू बैक नहीं, लेकिन 2 विकेट गिरे, इस ओवर में 2 बाउंड्रीज। तो पलड़ा जो है ऊपर नीचे इस तरह से होता हुआ पेंडुलम की तरह, कभी डम्बुला की तरफ तो कभी कैंडी की तरफ। और नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए जब 2 बेस्ट टीम्स खेल रहे हो एक टूर्नामेंट में, तो ऐसा ही होना चाहिए। एक वन साइडेड विक्ट्री या वन साइडेड डिफीट से कुछ हासिल नहीं होता। क्राउड के लिए एक अच्छा टसल हो तो एक अच्छा यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक रन आउट की अपील है, पर मुझे लगता नहीं है कि आसिफ अली अपने क्रीज से हिले भी हैं, और अलीमदार थर्ड अंपायर के पास जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी आसिफ अली अपने क्रीज से हिले। और चंदीमल थोड़े बहुत चिंतित हैं, पूछ रहे हैं आसिफ अली से आप आउट हो, तो पता नहीं आसिफ अली का रिएक्शन क्या था, क्योंकि चंदीमल के मुंह पे वो एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े स्टन्ड है। फुल टॉस था, स्ट्रेट ड्राइव था, और हेमंत अपने लेफ्ट साइड जा रहे थे, राइट साइड उन्होंने डाइव लगाई और हाथ लगा था उनके गेंद पर, और गेंद जाके पीछे स्टंप्स पे टकराई। अब क्या आसिफ अली का बैट जो है क्रीज के, जी हाँ क्रीज के बाहर तो था, पर क्या वो वापस आ गया था? हाथ तो लगा है, गेंद हाथ को तो लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आसिफ अली थोड़े से लेजी थे, बट मेरे हिसाब से उनका बैट जो है शायद आ गया था जब बॉल स्टंप्स को लग रहा था, पर वो शायद है उनका बल्ला अभी आ रहा है क्रीज में। तो फिलहाल थर्ड अंपायर यही चेक कर रहे हैं कि क्या गेंद जो है हाथ को लगी है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है गेंद उंगलियों को ब्रश करके गई है, और फिर जब गेंद जो है स्टंप्स को लगी, आसिफ अली का बल्ला जो है क्रीज में आ गया था, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन आगे हमें रिप्लेस देखने ही नहीं मिल रहा है, अब जाके देखने मिल रहा है। ओ नहीं, बल्ला हवा में है, और शायद यहाँ पे आसिफ अली को वापस जाना पड़ेगा। ये एक लेजी एफर्ट था, इनफैक्ट एफर्ट लेजी कैसे हो सकता है, लेजी अटेम्प्ट था आसिफ अली का, और यहाँ पर थर्ड अंपायर एक आउट का निर्णय शायद देंगे आसिफ अली के यहाँ पर। और अभी मैं कह रहा था अगर आसिफ अली यहाँ पर आउट हो जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ चढ़कर आ जाएंगी कैंडी पर। 102 पे 6 और आउट आ गया है जायंट स्क्रीन पर। आसिफ अली आए और आसिफ अली गए 3 रन के निजी स्कोर पर 3 रन, और मेरे हिसाब से बहुत ही लेजी एफर्ट था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत आगे निकल गए थे, सिर्फ चल के थोड़ा एक कदम आगे आए थे, और उन्होंने बहुत ही टाइम लगाया अपना बल्ला वापस रखने में, और बैट ड्राइव नहीं किया, उन्होंने बल्ला प्लॉन्क किया, इसकी वजह से गेंद जो है उनके स्टंप्स को लग गई, और बल्ला जो है हवे में था जब गेंद स्टंप्स पे लगी, और अचानक से ये मैच पूरी तरह से घूमता हुआ
88 फॉर 3 से अब कैंडी हो गई है 102 पे 6। तीसरा विकेट गिरता हुआ 14 रनों के अंतराल में और गेंदें कंज्यूम हुई है 11 पिछले 11 गेंदों में 3 विकेट और 14 रन। 61 रनों की आवश्यकता आखिरी 7 ओवर में और सिर्फ 4 विकेट शेष। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickon accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful unpredictability of cricket matches exclusively on the Crickon app. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon app. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickon accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Embrace the delightful... स्वागत है आपका 102 6 विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर एक और विकेट शाहनवाज धानी आ गए हैं और यहाँ पर 7वें विकेट का पतन हो चुका है। आए कौन? आशीन बंडारा। गए कौन? आशीन बंडारा। एक शॉर्ट बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसे कट करने का प्रयास किया आशीन बंडारा ने, गेंद ने बल्ले का भारी सिरा लिया और क्या बेहतरीन कैच वहां पर विकेट कीपर द्वारा। बहुत ही बेहतरीन बढ़िया कैच है। सदीरा समरा विक्रमा अपने दाएं तरफ छलांग लगाई और उन्होंने वो कैच लपका था। एक ऐसे ही कुछ हुआ था जब दिनेश चंदीमल बल्लेबाजी कर रहे थे अर्ली ऑन, और शायद धानी का पहला ही ओवर था वो, और ऐसे हमें लग रहा था कि शायद आउटसाइड सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गया है, लेकिन तभी बल्ले को, अभी हमने अल्ट्राइज तो देखा नहीं, लेकिन तभी ऐसा लग रहा था कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा है, पर अब बिल्कुल लगा है और आशीन बंडारा भी गए हैं। और क्या कोलैप्स है ये, कोलैप्स ऑफ डिजास्टर्स प्रोपोर्शंस वो कहते हैं अंग्रेजी में। और हमें ऐसा लगा ये असर दाम्बुल्ला पे होने वाला है, पर उल्टा ये असर कैंडी पे हुआ है। 88 फॉर 3 थे वो 11.3 ओवर्स में, 88 फॉर 3 और अब 11.1 ओवर्स में सॉरी, और 88 फॉर 3 से अब हो गए हैं 102 पे 7। यानी पिछले अगर हम कहें पिछले 12 गेंदों में 14 रन और 4 विकेट। ईसुरु उदाना आए हैं नंबर 9 पर। इनकी बैटिंग तो अभी भी है, बट ये लास्ट पे है, इसके आगे बल्लेबाजी नहीं है। और अब यहाँ पर चंदीमल को एक ब्लाइंडर खेलना ही पड़ेगा उन्हें, या तो स्ट्राइक फार्म करना पड़ेगा या तो कुछ तो एक उस उदाना को कहना पड़ेगा कि चलिए काउंटर अटैक कर दे, क्योंकि वैसे भी हारने वाले अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो। 61 रनों की आवश्यकता 41 गेंदों में, और उदाना की स्ट्राइक रेट अच्छी है 131, लेकिन हाल ही में उनकी बैटिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। चलिए आते ही उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, दिनेश चंदीमल को वापस स्ट्राइक दे दी। बैक ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर कूदकर उन्होंने पंच कर दिया कवर्स के थ्रू और 1 रन अपने नाम हासिल कर लिया। 103 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसा क्या हुआ है कि एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने पर मैच पूरा घूम गया? एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था एंजेलो मैथ्यूज का। फिर चतुरंगा डिसिल्वा अपना विकेट फेंक के गए, आसिफ अली भी अपना विकेट फेंक के गए और आशीन बंडारा भी अपना विकेट फेंक के गए हैं। क्योंकि आप मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की लाइन को कट कैसे कर सकते हैं? आपको कट करने के लिए एक रूम तो चाहिए, आपको एक बैट्स लेंथ तो चाहिए कट करने के लिए, एक आर्म्स लेंथ एटलीस्ट। ये तो आर्म्स लेंथ भी नहीं था, आप रूम पे क्रैम्प्ड हो गए हो, तो वो तो एक टेक्निकली खराब शॉट था ही, वही हुआ है, कुछ ऐसा खासा हुआ नहीं। इनफैक्ट धनुष मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे और हम विकेट देख रहे थे। मोहम्मद हारिस विकेट फेंक के चले गए, फकर जमान विकेट फेंक के चले गए, वलिंद वासरंगा थोड़ा डिबेटेबल है, विकेट फेंक के नहीं गए, चले उनको इग्नोर कर देते हैं। एंजेलो मैथ्यूज विकेट फेंक के चले गए, चतुरंगा डिसिल्वा विकेट फेंक के चले गए, आसिफ अली विकेट फेंक के चले गए, आशीन बंडारा विकेट फेंक के चले गए। कहीं मैच तो फेंक के नहीं जा रहे ये लोग। देख सकते हैं हम 16 रन में कौन 4 विकेट अपने आप को खोता है। और
जरूर यहाँ पे एक सिचुएशन हो चुका है कि कैंडी, मुझे नहीं लग रहा था 2 ओवर पहले कि मैच ऐसा हो जाएगा, और अभी सिर्फ 2 ओवर में पूरा पासा पलट चुके हैं यहाँ पर दम्बुला ओरा। जो हम बोल रहे थे 5 चेंजेस किया है, बेंच स्ट्रेंथ को यूज किया है, बॉलर्स सभी पूरे टूर्नामेंट नहीं खेले हैं, सब कुछ बोल रहे थे हम, पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन में यहाँ पे पासा पलट दिया है यहाँ पर बॉलर्स जो है दम्बुला ओरा की। और खास उसमें जो पासा पलटा है वो आज दिन का कैप्टन, अलॉटेड कैप्टन जो है धनंजय डिसिल्वा, 4 विकेट्स 6 रन देकर 2 ओवर में, और क्या बढ़िया बॉलिंग उनके द्वारा, और दोनों ओवर में 2-2 विकेट, दोनों ओवर में 2-2 विकेट। और आज तो वो एक क्या बोल सकते हैं हम, वो एक मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि पिछले इनिंग्स में भी हम देखा 2 ओवर में 2-2 विकेट गया, आज दोनों ओवर जो धनंजय डिसिल्वा बॉलिंग किए वो वहां पर 2 विकेट मिला। और यहाँ पे एक इनसाइड एज की अपॉर्चुनिटी थी, पर सेफ हो रहे हैं यहाँ पर रिसुरु उड़ाना, सिंगल लेकर चंडीमल को स्ट्राइक दे रहे हैं, और अभी 57 रन चाहिए 38 गेंदों में, और अभी प्रेशर है दिनेश चंडीमल के ऊपर, और स्लोअर गेंद डाल रहे हैं यहाँ पर शाहनवाज दहानी, और उसको कट करने की कोशिश, जरूर रूम नहीं थी, और बैट के ऊपरी सिरा रखकर सीधा विकेट कीपर के हाथ में आज, और सबको आज बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता हुआ, और खुद दहानी तो शॉक हो गए थे वो विकेट लेकर, और सेलिब्रेट करते हैं नमस्ते कर वहां पे अपने बाकी खिलाड़ियों के साथ। यहाँ पे एक शॉर्ट पिच डिलीवरी, और इसको स्क्वायर लेग की तरफ एक सिंगल लेते हुए आखिरी गेंद यहाँ पे आ रही है। 107 पे 7 है यहाँ पर कैंडी, बीलो कैंडी टीम, और जरूर अब एक चिंताजनक स्थिति पर है यहाँ चंडीमल का टीम। देखना पड़ेगा क्या होगा, और एक प्रीव्यू है जरूर, ये हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टीम शायद हम देखेंगे खेल एक दूसरे के सामने खेलेंगे क्वालिफायर्स 1 में जो होगा परसों, पर आज यहाँ पर जरूर एक बढ़िया से कमबैक का सेकंड टायर टीम जो दम्बुला और आज खेल रहा है उनके तरफ डॉट बॉल की तरह एंड कर रहे हैं, डॉट बॉल से एंड कर रहे हैं यहाँ पर दहानी अपने तीसरा ओवर। 14 ओवर हो चुका है, 107 पे है 7। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickon accompany you through every आखिरी ओवर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर एशली नर्स, श्रीलंका के एशली नर्स जो है यहाँ सचित जय तिलक के अपने 4थे ओवर बॉलिंग करने आ रहे हैं। 19 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया था। वो था भारी भरकम का प्लेयर जो इस लंका प्रीमियर लीग में है, वनीदू हसनंगा के। और यहाँ पे 108 पे 7 है स्कोर बीलो कैंडी को। और क्या जो दूसरे स्पिनर है जो कप्तान है दम्बुला ओरा के आज जो धनंजय डिसिल्वा, उनसे क्या यहाँ पर एक इंस्पिरेशन लेकर एक और विकेट ले सकते हैं यहाँ जय तिलक के अपने आखिरी ओवर में। एक बढ़िया सी शुरुआत हुआ है उनकी एक करियर में इस LPL में, और पहली अपॉर्चुनिटी में यहाँ एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए और एक इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। पर मैच में कुछ भी हो, प्रेक्षक द्वारा यहाँ पर एक सेलिब्रेशन हो रहा है। सभी यहाँ पर अपने अपने ग्रुप्स में एक इन्वॉल्वमेंट हुआ है और ज़रूर एक बढ़िया सा माहौल तो बन चुका है यहाँ पर आरफने मेहता स्टेडियम में। जी हाँ बिल्कुल, उनका स्टैमिना देखिए, कब से नाचते ही जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है ये ऐसे नाचते रहना, और की पूरी शर्ट जो है भीग चुकी है पसीने से।
और यहाँ पर जय तिलक एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए गुगलीज डालते हुए लोअर ऑर्डर बैट्समैन को, और वो कौन सा एक टाइम होगा जब भी दिनेश चंदीमल को ऐसा लगेगा कि मुझे अब अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए। शायद अभी एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक आएगा इस ओवर के बाद, और उसके बाद शायद चंदीमल मे बी वन सिंगल हैंडेडली इसे जिताने का प्रयास करेंगे। एक और गुगली उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए, क्योंकि उदाना आए हैं 6 गेंदों में उन्होंने 3 रन बनाए हैं। चंदीमल ठीक ठाक खेल रहे हैं 40 गेंदों में 41, लेकिन अगर कोई है यहाँ से जो कैंडी को जिता सकता है तो वो सिर्फ दिनेश चंदीमल ही है। आखिरी डिलीवरी इस 15वें ओवर की 54 रनों की आवश्यकता 31 गेंदों में, और एक और गुगली पंच कर दिया उसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन मिलेगा एलेक्स रॉस जब तक इस गेंद को रोकेंगे। 3 रन ओवर में आते हुए 15 ओवर के बाद 110, 7 विकेट के नुकसान पर सचिता जयतिलक 4 ओवर 22 रन और 1 विकेट। आखिरी 5 ओवर में चाहिए 53 रन। क्या यहाँ पर बैटिंग साइड एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक लेने वाले हैं या नहीं? नहीं, शायद अलिंदार कह रहे हैं कि आपको मुझे 1 ओवर पहले बताना चाहिए था, अब हम स्ट्रेटेजिक ब्रेक नहीं ले सकते, अगले ओवर के बाद ही आप स्ट्रेटेजिक ब्रेक ले पाएंगे। अनफॉर्चुनेट बट रूल्स आर रूल्स, फॉलो ना करें तो फूल्स आर फूल्स, गो बैक टू स्कूल्स। Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crick-On app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crick-On app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill. Right, 5 overs left now, 53 needed from 30. Little bit of controversy on the last ball of the previous over. I think Chandimal wanted to take that strategic break, but Halim Dar told that you have to inform me an over in advance. You can't just directly tell me on the last ball that you need a strategic timeout. And that's fair. That's fair. And Chandimal was visibly upset because he probably had plans to take a break right now and then go berserk towards the last 5 overs. But that's the way it is. Those are the rules, and we have to abide by the rules. Anyways, the first ball has been played for a couple 112 for 7. The next ball is a good short ball from Dahani, gets extra bounce on that one, and Chandimal just rides the bounce and dabs it towards backward point for a single. So how did both the teams fare in the middle overs? Well, Dambulla, we were criticizing them, weren't we? We were saying that they lost their way in the middle overs. 53 for no loss in the power play, 51 for 5 in the middle overs. Now let's check about this team. 47 for 2 in the power play. Okay, not bad. And then in the middle overs, 63 for 5. And well, they have just scored more runs than Dambulla, but have totally lost control over this run chase. It's 50 needed from 28 balls. Now we are fast approaching that scenario where they need at least 2 runs per ball. The required run rate is almost closing in on 12. It's not impossible. I'm not saying it's impossible, but it's getting difficult by the minute. Another single eked out to deep third. 49 needed from 27. When is that moment you feel, Dhanush, that Chandimal has to throw caution to the wind? I guess after the strategic timeout for sure. The last 4 overs he'd be having the mood of kind of taking the responsibility, playing most of the deliveries and scoring the runs out here, because he will be asking Udana to just rotate strikes whenever he's on strike. But apart from that, he will be making sure that every delivery he needs to play and get those runs. At the moment, he'll be just making sure that he gets one odd boundary here and there as he attempts one here and gets one out here as well. Full on delivery outside off stump, and he drove down the ground, and the ball has raced into the extra covers region, and Hayden Kerr even dived to stop it, but unfortunately the outfield was even quicker as the ball reached the boundary cushions for a 4. 49 for Dinesh Chandimal. He has played a kind of an anchor innings out there, almost playing 40 plus deliveries, but now he needs to stay on and make sure not this 50 is valuable only when the beloved Kandy get the W on their side. So at the moment, the pressure is still on. 45 of 26. It's always achievable, but if Chandimal goes off now, it will become unachievable. But this time also a swing. Every single time, whenever I'm seeing Shahnawaz Dahani bowl something outside off stump, pitches, pitching and going out, and that is why the umpire Alim Dar called it a wide as well, because
It was going outside the wide line after pitching, and that is why the wide has been given. 44 required of 26. Last couple of deliveries remaining. I guess one more boundary, and if the required score is less than 40 in the last 4 overs, that is around less than 10 runs. So it is going to ease off the pressure even more for Dinesh Chandimal. This time he flicks it towards the square leg region, and that's a 50 out there for Dinesh Chandimal. And he comes for a second. No, he doesn't come for a second out there. Brilliant half century for Dinesh Chandimal. I guess this is his third or fourth 50 in this tournament, that is the Lanka Premier League, and he has done brilliantly for himself. 966 runs, 36th game that is, and he has a best of 80 under his name. Last ball coming up, 120 for 7, that is the beat of Kandy team. It is Mysuru Udana on strike. Will he get some runs, some outside edge through the third man region? That is something we need to see out there. Last ball coming up from Shahnawaz Dahani out here. Short pitch delivery, and it's been just pushed towards the extra covers fielder. Dot ball to end, 120 for 7 after 16 with around 43 runs required, and it is finally a strategic timeout.
43 required of 24, and Hayden Kerr is back. Opportunity for him to showcase his quality, but today has not been his day so far. And right now the leg side is short, and all the fielders the leg side are on the boundary line. And he has managed to showcase in the very first ball, because Dinesh Chandimal has chopped his wicket himself, and the most important wicket that was required for the Dambulla aura, they have got it in the first delivery itself, immediately after the strategic timeout. Dinesh Chandimal walks back for 50, and Hayden Kerr steps up at the moment that is required. Absolutely. I was about to ask you, Hayden Kerr, after enduring a very, very poor match, he rolls his fingers over the ball, and that break has not done Kandy any good. And probably that is the game, unless Udana can play a blinder from here. It was a length delivery outside the off stump. Chandimal went for a big heave-ho, but only managed to drag it onto his stumps. But a good innings, nevertheless, 50 from 46. Only criticism is that he could have played probably a bit quicker. Because we look at the innings, this is the scorecard. Just 3 people into double figures, and only 2 above 25, and those 2 were Angelo Matthews and Dinesh Chandimal. So basically, no one has applied themselves on the wicket, and that's why we see a string of single digits. And now Mujibur Rahman has come ahead of Nuwan Pradeep at number 10, and well, the difficulties just keep on mounting for Kandy. 43 needed from 23 balls, make that 22 balls now. Slower delivery from Kerr outside the off stump, and it is pushed towards short extra cover. What are the possible options in the last 4 overs? Of course, Hayden Kerr will bowl the 17th, and then in the remaining 3 overs, well, Dhananjay De Silva has got the option of Pramod Madhusan if he wants, and yeah, I think Pramod Madhusan and Hayden Kerr only will finish it off, unless Dhananjay wants a fifer and he comes to bowl the 18th over, which is a possibility. It's not something out of the ordinary, because many times we feel that the fast bowler will get the tail ender out, but sometimes a spinner comes in and the tail ender feels that he can slog the spinner out of the park, and he ends up gifting his wicket away. But will Dhananjay take that risk to get himself on in the 17th over? I doubt. But so far 120 for 8, and now Kerr coming in 3 dot balls so far in this over, and Kerr bowls it from over the wicket. Played towards point where the fielder dives, gets a bad bounce, and the ball goes off his shoulder towards deep point. Just a single. 121 for 8. And it's exactly the figures that you were reading of Hayden Kerr. So eventually this is probably going to be a 1 for 24 match only, but in 3 overs instead of 4. Yes, that is why I was saying. Always Hayden Kerr has got the wicket also, but he has been expensive. That is what I have seen in this Lanka Premier League so far. First time I'm seeing him in this league, and I guess it is his first appearance as well, because he has just made his name in the Big Bash League, and kind of making sound coming towards the Australian international team as well. A single has been taken towards the square leg region. Last ball coming up of this over. Brilliant comeback for Hayden Kerr. 21 runs he considered in the first 2 overs, but now he is considered just 2 runs in this over, bowling off cutters. And as far as Dinesh Chandimal's wicket is concerned, that was an off cutter, and Chandimal wanted to hit it hard, got that inside edge, and it went back and chopped his wicket, just like how Vanido Hasaranga also got out. Final delivery, a single has been taken towards the mid-off. 123 for 8 are the beloved Kandy team. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned, stay curious, and let Crickon accompany you through every delivery, boundary, and game-changing moment. Well, I wanted Dhananjay De Silva to come back and try and take a fifer and just challenge himself to bowl in the 18th over. But one thing is for sure,
we now have the qualifier 1 locked, because as per the mathematicians who are doing the analytics, who are doing the statistics, irrespective who wins tomorrow, Gaul or Colombo, they are not going to surpass Kandy's net run rate. So Kandy are going to stay second, assuming, of course, they don't win this match. If they win this match, then any which ways the qualifier 1 is sorted. But even if Kandy don't win today, Dambulla on 12 and Kandy on 8 will be 1 and 2. And then whoever wins tomorrow will be third, and Jaffna Kings are more or less knocked out only. So that will be the kind of... Oh, Jaffna Kings are third. The third and fourth position will be decided tomorrow, but the first and second position are decided, because Kandy needed to avoid being bowled out for 111 or less, and they've avoided that. And then irrespective of how many runs they lose from here, or if they can win this, they are not going to be pulled out of that qualifier 1. But want to understand from Dhanush, and at least from a personal point of view, would you have wished that Dhananjay De Silva came in at this stage and just challenged himself? Because for Dambulla, it doesn't matter, even if they lose this match. And even if, say, he had come in and maybe Udana or Mujib had gone for a few runs, but something out of the ordinary, tried something else, try and get that fifer, and who knows, the tailenders might have just got out. He still can do for sure in the remaining 2 overs. But do you think he'll come in the 19th or 20th over? I hope so. But I guess since these players like Madhushan, Hayden Kerr might not make it to the playing 11 in the playoffs, he's making them play these games and showcase their talent. It's more like Hardik Pandya saying, we are trying out players. That is what Dhananjay De Silva might say. He got 4 for that is a different story altogether. But he wants to see how these players play in these scenarios. Yes, they are bowling to the tail-enders, that won't mean much. But let us hope that Dhananjay De Silva takes up that 1 over that he can bowl in the next couple, and kind of try to get the wicket. Because even though he might have 4 wickets, the moment he takes the ball, Mujib and Udana will be kind of made to feel that let me go. He might have taken 4, but let me go for a wild swing. And they might go for it and give up their wicket. That is for sure a thought in the head. This time, it has been bowled on the off stump, and it is hit towards Alex Ross, who is in the extra covers region. And looking back into the game, while batting, we were definitely saying that Dambulla didn't do the justice for the openers what they did. They gave them a beautiful opening. But after that, the middle order did not perform as expected. But then, at some support from Ben McDermott and Hayden Kerr in the final stages, definitely took them to 163. But today, the way the bowling has been done, we can only say that the major difference is that middle overs. That is why we see Kandy kind of losing this game. 2 overs remain, 36 required. 127 for 8 are the beloved Kandy team. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Don't be a mere spectator. Become an active participant in the thrill with Crickon. Our podcast acts as your gateway into the cricketing universe, while our match predictions become your secret arsenal to intensify the excitement. Stay tuned. Stay curious. 36 needed of 12 balls, and no Dhananjay De Silva, at least for the 19th over. And it's Hayden Kerr only, and as rightly mentioned by Dhanush, it's more about people getting opportunities, at least for the Dambulla aura. And we might see Hayden Kerr play in the knockouts, but I definitely don't see Pramod Madhushan play in the knockouts from what we have witnessed so far from Dambulla. So yes, allowing them to play as much as possible. Another inside edge, and this one narrowly missed the stumps. A cutter from Hayden Kerr. Udana got across and tried to swing it to the leg side, but got a thick inside edge which raced past the off stump to the fine leg fence. For a moment I thought Shahnawaz Dani got to the ball from short fine leg, but in the end he just gave up. So a boundary then, but looking at the equation, it's just on kind of, makes no difference to the total kind of thing.
131 for 8 as 32 are needed from 10 deliveries. Length ball, well, this will lift some of the fans' mood in the Kandy camp. It's a length ball on middle and leg, and Udana has to flick this way over deep mid wicket for half a dozen. So boundary of the second ball, 6 of the third ball. Is this match still alive? 26 needed from 9 balls. If we can get to 20, under 20 in that last over, you never know. We might have a run chase on. Absolutely. We might have, because they might require 1 or 2 more in the remainder of this over, and they can back themselves of chasing 15 in the final over, and that is definitely possible. Once again, swing and a miss out there by Isuru Udana, and he is the one who needs to do this, because he has had a history of tonking and doing things for his team in irrespective of whichever team that he has played. But definitely this is some late fireworks that we are seeing from the batters of the beloved Kandy team. Or that the ball is staying low, and even the wicketkeeper was surprised that the ball did not come into his gloves as expected. Once again, swing and a miss, and again he stops it via his pads and not via his gloves, the wicketkeeper. And this is good comeback by Hayden Kerr after going for a boundary and a 6. 2 back-to-back slow deliveries and beating the batter, that is Isuru Udana, out there. Last ball coming up, and 26 is required. Now I can say that the match will be towards the Dambulla aura, and they will be winning this contest and taking the W towards them, because 25-26 runs in the final over, that is asking way too much from a number 10, number 11 batter. Without a doubt. And even if he's not the number 11 batter, it's still a very, very difficult ask. Final delivery from Hayden Kerr. What can he produce? Can he get a wicket? 3.5 overs, none for 34. 1 for 34, beg your pardon, are his figures. There is a strip in place. A low full toss steered through the covers, through point rather. It will be just a single. 11 runs from the over, but sadly for Kandy, it is not going to be enough. 25 runs needed from the final over. Hayden Kerr finishes the figures of 4 overs, 1 for 35. Will Dhananjay De Silva try that risk, try and bowl the 20th over just to get his fifer, or will he give Pramod Madhushan that experience of bowling in the last over? We'll know in a short while. Prepare yourself to be engulfed in the grandeur of cricket with the Crickon app. Immerse into our captivating podcast, coupled with live commentary covering an extensive spectrum of exhilarating matches. From international showdowns to heart-stopping leagues, our app boasts an extensive lineup. Join us as we guide you through an unparalleled cricketing expedition exclusively on the Crickon app. Don't let the excitement pass you by. Unleash your inner cricket aficionado. Inside edge, and the ball has gone into the final leg region for a 4. Isuru Udana is going for the wild swings and kind of getting some luck out there. Last over also he got luck, and he got a couple of boundaries out there. This over, the first ball itself, he has got the inside edge, and the ball has raced into the final leg region for a 4. 21 required of 5 deliveries. Pramod Madhushan is bowling, and definitely Dhananjay De Silva is kind of not taken those 4 wickets seriously. He has taken it as a gift, as we were saying, that has been given. And Pramod Madhushan cleans up, and he has taken the 9th wicket. Will he take one more and clean up the match and clean up the beloved Kandy team? And also one more thing also, we need to say beloved Kandy were the only team in this tournament so far to beat Dambulla Ora in a 20-over game. So they have kind of extracted the revenge, that too by playing their second tier team. So they will be very, very confident with 12 points that they will be having at the end of this game. 6 wins of the 8 matches. Really very helpful booster for the team of Dambulla going into the playoffs. Absolutely. And these are all bragging rights. They know that they're going to meet Kandy again day after tomorrow in qualifier 1, and in all likelihood maybe they might meet Kandy again in the final. These two teams might be playing that final. So it's first round went to Kandy, second round has gone to Dambulla, and these bragging rights do help. And whatever happens at the latter stage, that is always helpful, because the later half of the momentum is what you carry forward into the knockouts. 142 for 9, and where did Kandy lose this? I think not in the middle overs, but just through that middle order, because only 3 batters
could get into double figures. Fine, also Isuru Udana managed to get into the double figures, but 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 out of the top 8 have been dismissed. 5 out of the top 8 have been dismissed for single digits. Now that is their problem, and those 5 batters have collectively faced just 17 deliveries. Now that is a crime. If 5 out of your top 8 batters just face 17 deliveries collectively, and that means on an average you're facing just 4 balls. On an average you're facing just a shade over 3 balls. So that is what the problem was for the Kandy team. But never mind, and they'll look to learn from this and come back stronger in qualifier 1, and if possible if they meet again, and they might meet again, that's a separate issue. But for now it's the end of the game. A fine Yorker from Pramod Madhushan, and Nuwan Pradeep is way too late in getting his bat down, and the ball has gone under to crash into the stump. So chasing a target of 163, well, Wheel of Kandy have fallen 20 short as they have been bowled out for 142 without even playing out their 20 overs, with just 4 batters entering into double digits. Dinesh Chandimal 50, Vanindu Hasaranga 19, Matthews 26, and Isuru Udana providing some fireworks in the end 23. If I add these 4 batters' scores, it comes to 118. So 4 batters have scored 118. Extras are 7. That's 21-25, and the remaining 7 batters have added only 17 runs. That's right. 7 batters have collectively added only 17 runs, and it has been a total batting catastrophic failure. First, it was Fakhar Zaman to go, caught at mid-off by Avishka Fernando for 8. Then Mohammad Haris departed just 2 balls later, getting caught in bowl to Dhananjay De Silva. That is the first instance in this innings of 2 wickets falling in an over. Then there was a bit of a partnership. Vanindu Hasaranga came out and tried to counter-attack, and at that stage Kandy were coming back into the game. But then he dragged one on of Jayat Tilake. He was dismissed for 19, and then came the turning point of the match, because Angelo Matthews came in and started to counter-attack from the ball go, and he and Chandimal were taking the game away from Dambulla at 88 for 3. They needed 75 from 53 balls, and we were on air and we felt that the match is gone for Dambulla, and we were talking about 5 changes, the inexperience, etc., etc. And suddenly, in a matter of 5 to 10 minutes, the whole scenario changed, because Angelo Matthews chipped one straight back to Dhananjay De Silva, and from 88 for 3, the Wheel of Kandy just lost their way totally, getting bowled out for 142. They have lost 7 for 54. 7 for 54 in 51 balls. That is the extent of collapse. Angelo Matthews departing for 26. Then Chaturanga De Silva falling 3 balls later. That is the second instance in this innings where 2 wickets fell in the same over. He fell for 1. Then Asif Ali was lazily run out as he did not back up at the non-strikers, and he departed for 3. Then Ashin Bandara tried to Ashin Bandara was caught by Samara Vikram of Shanawaz Dhani. He went for a first bowler. Dinesh Chandimal tried to keep the run chase going, but he was too slow by his own standards. 50 from 46. He was cleaned up by Aiden Kerr, and towards the end, Isuru Udana tried to entertain the crowd, 23 from 21, but it was too much for him to do, as Mujib and no one couldn't help the scores much. Looking into the bowling attack, we will see that Pramod Madhushan got the final 2 wickets in the final over, 2 for 27. Dhananjay De Silva was the one who did the catch with the ball, 4 for 6. Maybe his best figures in the game in this tournament, might be. We need to see into that. Shanawaz Dhani 1 for 25 in his 4 over. Beautiful bowling from him. Hayden Kerr 1 for 35 in his 4. And then Sachit Jayasinghe 1 for 22 in his 4. 2 overs of 23 runs did not go well for Dushan Hemanta in the day. But Dhananjay De Silva took the major wickets and did the deal for the Dambulla Aura as they win their 6th contest, finish up at the top of the points. 5 in a row. 5 in a row, for sure. Yes, 5 in a row. They lost the first couple of, I guess, and then managed to come back. So 5 in a row and 12 points, top of the table, and they are going with heaps amount of confidence because their second tier team have beaten the number 2 team in the tournament. Exactly. In Wheel of Kandy. We were questioning this at the toss. What is happening? They made 5 changes. They could end up losing the momentum, and their batting was not convincing. They started powerfully, 61 for no loss, but from 61 for no loss, they lost their way.
to 104 for 5, with Avishka Fernando top scoring for 41. But that last bit of surge by Ben McDermott's 37 and Hayden Kerr's 26 lifted them to 162, and after that their bowlers came to the party. As far as Beloved Kandy is concerned, they have certain positives. Mujib 2 for 32, Chaturanga De Silva 1 for 21, Nuwan Pradeep 3 for 35, but increasingly their skipper Vanindu Hasaranga needs to find an answer. His bowling is not bad, but teams are deciding not to give him wickets at all and not to take risks. Does he have it in him? Just like we had with Rashid Khan at one point in time, wherein he was economical, but he was not picking up wickets. If Vanindu Hasaranga does not perform, his team is not able to win, and that's a serious case of over-dependency on one player. But for now, that's all we have from this particular match. As Kandy falls short by 20 runs, it will be the same two teams which will meet in a couple of days' time for qualifier 1. But who will meet in the eliminator? For that, you need to tune in tomorrow, as we will come to know who will be number 3 and number 4 eventually in this 2003 edition of the Lanka Premier League. That, of course, will be brought to you by our other colleagues, plus some ECS action will also happen through the day. So do tune in on 15th August, that's on Tuesday, for all the action from the Crickong app. For all the listeners who are based in Pakistan, once again, a very, very happy Independence Day to you. And for all the Indian fans who are based in India or elsewhere, anywhere we are in this world and wanting to listen to our podcast, I will wish you a very, very happy Independence Day on the 15th of August. We are not far away from the clock striking midnight. Well, until then, on that note, this is the pair of Karthik and Dhanush signing off. Wish you a happy Independence Day once again. Goodbye and good night. See you soon. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.